जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत संविधान भारत भाग्य विधाता। जम्मू कश्मीर हिमाचल पंजाब दिल्ली हरियाणा यूपी उत्तराखंड बिहार गुजरात मराठा ओडिशा उत्तर पूर्व द्राविड़ कर्नाटका तेलंगाना आंध्रा केरला उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल तवी यमुना गंगा सरस्वती कृष्णा ब्रह्मपुत्रा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा सर्वधर्म नागरिक भारत विधाता। जनगण मंगल दायक जय हे भारत संविधान भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय भारत वंदे मातरम। सुजलम सुफलम मलया शीतलम मलया शीतलम सहस्या सामलम पात्रम वंदे मातरम। जय भारत। Welcome all to my talk. This is Engineer Suraj Singh speaking from Faridabad, NCR, Haryana, Bharat, India. Today, 6th February 2020, another day of year 2020, which is great year as well as super great year, because it's telling us what we are about. People are on unrest, people are on track of change, track of transition of future of this country. Whole world in fact is changing, but we are really going to have a change of drastic nature as well as golden nature. We are moving on a track which is not easy but also not very difficult. CAA, NRC and NPR and all other issues have been there for weeks and months, and you can say in fact since August 5, 2019, day when issue of 370 was taken up, which was a great as well as worst day. Great in a sense that our transition started, and worst in a sense that we thrashed something which should have been thrashed. Kashmir issue is very burning issue, still burning issue. It has been more than 6 months. 5th of August to September, October, November, December, January, February. 6 months have been over. Today is 6th. More than 182 days have gone, and people whereabout, people goodwill, people welfare is unknown. A history has been created in constitutional Bharat, COI Bharat. We people of this country having resolved to constitute this country Bharat into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, to ensure to its people justice, equality and liberty, to create total brotherhood among them. That oath of every citizen, oath undertaken by soul of every citizen, has been thrashed by actions of our public and government. I cannot blame public and government together. I can blame public because government is nothing for me. Public is government. It's very big question that today a revolution has been ongoing for more than 2 months. A revolution that never was expected, never was dreamed
but that has started. A name has appeared, a symbolic name, a legend name that is called Shaheen Bagh. Shaheen Bagh, which is located in Delhi, NCR. Shaheen Bagh, though nobody knew that 2 months before or 1.5 months before, but now it's a national name. You may say that. National name in a way that it's a great revolution by general public since 1947. There have been so many revolutions which were just fake revolutions, and these revolutions were fake because they were, you can support revolutions. For example, Anna revolution came, and before that many other revolutions in many states. Those were all vested revolutions. Those revolutions had nothing to do with facts of public. Actually, those revolutions were not directly supported by public. These revolutions were led. Kejriwal led, Anna led, or so many were there who led, and I don't want to name them because those people have gone in history. Nobody respects those names because they wanted to do something, but they failed to do that. They diverted their tech, their destiny, and they got their benefits out of that. So I cannot call them revolutions. They were politicized revolutions, you can say. And before that, many revolutions happened supported by CPI, supported by all other BJP. And this means I don't consider revolutions. First revolution, in fact, since 1947 is CAA and NRC opposite revolution. This revolution is actually constitutional revolution. This revolution is actually a national and international pro-Bharat revolution. Means our country is being examined throughout the world, what actually we are, what sort of people we are. Are we really people or we are just sleeping society? This examination is ongoing. By chance yesterday, I had little plan to go to Shaheen Bagh from my home in Faridabad. I reached there just to have a glimpse. I reached there around 4 in afternoon, and of course I reached by walking from metro station to that one just to see what's happening everywhere. Ordinary area, no specific decoration, just as usual routine life, and I was impressed because earlier also I went there, but it was morning time, so I did not have an opportunity. I came back. When I reached there and entered that area where this revolution was staged, I was, you can say, checked by security people, not security people of agencies or police, but ordinary people. They themselves, self-security means self-decision security. They're organizing that area themselves, and I was impressed with that. A rope here and there, 2-3 ropes, you have to go through those and secured before entering. Well, this was positive impact on me, that at least they are worried about the person who comes should not have any weapon or whatever you can say. Better way, a lot rush, maybe more than 15,000-20,000 citizens gathered there, below these shamianas, their tents, or below, you can say, a good house there, clean one. But I found normal people, normal citizens, no made up people. Of course, press were there, journalists were there. I was wandering here and there, just I spent about 10 minutes to see every point from where, who was here. All ladies sitting there, women folk in hall, means Shamayana hall, and people sitting aside on railings or this and that, means a quite attractive gathering, you can say. In a gathering that's not organized one by political parties or by some support. It was a gathering, you may say that it was ordinary gathering, not very well organized gathering. People are walking, some places I could see there's media people, YouTube people, or someone else talking to people and recording all that. I tried to see I thought how to talk to responsible people for my own views.
I couldn't find anyone. I talked to three people. How can I enter in? Then I was suggested go to that end, attend. Behind stage, there's some person recording if you want to participate in this speeches or in this. If you want to speak something, you have to talk to them. Well, I thought, why not to take this opportunity? Because I had something in my mind, but I was not fully aware of situation. And I moved to that point. Okay, where is this guy sitting to allow me to speak or to sit inside arena to express your opinions? I reached that point, and there were three or four girls was sitting, ladies was sitting on table desk. Someone were recording, some media person were there, cameraman were there, and they were recording in the details and giving a certain pass, you can say, that without that pass, media were not allowed. Entries of all media person was done. Entries of all media person were made there. I asked, what's this issue? This of media. And after getting that pass or ticket, they could go to people to interview. Well, that's good, means they were organizing something just to avoid any mishap. I was impressed with that. Besides, they're taking the self-care. Then I just asked them, please, I want to share my opinion. It's okay. You have to fill up a form there. I waited for 5-10 minutes. It's rush. Then one person came and asked, why are you standing here? Well, I told I just want to share a fill form. Okay, fill a form. Show me your ID card. I show my ID card, and my ID card was Institution of Genius India Fellowship membership at that. Okay, but where's your Aadhaar card? I told him I didn't bring Aadhaar card. This is my passport, more than Aadhaar card. If you're not interested, I'll go back. No. You are engineer. Yes, I'm also engineer. But bunch of civil, I told. Okay, I'm also civil. Then it's okay, fine. Fill a form. Well, my form was filled. I was directed to go inside and give this page to form to someone. I submitted that one, and it's okay. Wait. Well, I didn't know that I will have to wait for a few hours, because I thought maybe in 10-15 minutes my time will come. But my number was 29, and I had to wait. I waited for about 1.5 hours. There were many speakers coming in, and youth and others were coming. I heard many of them. Then I asked, means that lady, how much time will it take for me? And she said, your number is 29, only it will take, and 10 more speakers are there. After that, the number will come. And well, I observed that more than 35 applications were lying there. Well, I thought I could not do that, means I cannot. He said, okay, you have to wait for 1 hour. If they are saying 1 hour, it will be 2 hours. And it was already 6 o'clock. So I said, 6 o'clock in evening. So I said, I thought, means I can't wait that much, because I go back. At night I could not wait, so I skipped that. Well, no problem. That I had no chance that day. No problem that one. I'm not regretful of that. But what I heard there, what I viewed, the disciplined house was disciplined. People were not very, you can say, they were sitting for duly managed under them by themselves. Whole women folk sitting, thousands of women sitting there. Then they were well managed, drinks and breakfast for them. People were speaking. I was very impressed, but by their self-organization. That is fine, means when you have to control yourself, it's very good, self-service people. But one thing I was not very impressed, speakers, classes of speakers. See, when there are people, thousands of people sitting, though they are ordinary people, they are citizens of this country. All times, if you talk same thing, NRC, CAA, NPR, this and that, and Bharat and all that, I think it's more than 1.5 months. How long can you talk same thing every day, every minute? I heard many speakers, and either they would do shairi, or they were telling something. We just came to see you. You are a very big people. You are leading whole nation. This and that. The same type of repetitions means which has nothing to do again. And if you talk something again and again, means it gets no destination, it gets no way. Well, it's just past time, if you can say, fine. Because these people have no other work except to stage this opposition protest. Fine. That's the. But everything was fine.
Everything is fine. I am very much impressed with that, with organizations and with participants who are participating in this protest. All posters were there, everything was there. It's very nice. The speeches were also voluminous. But one thing I could not get in means there was no quality of speakers. Means when I submitted my application, they fill my statistics, my name, etc. Nobody questioned me what sort of speech I had to deliver. This means they were just entering your identification, that's it. There was some undertaking that you will not speak about political parties, you will not speak about elections, you will not speak something wrong about someone, just you concentrate yourself or confine yourself to CA and RC and all that, and do not talk anything which goes against organization objective. Well, that's normal one. I signed, that's no problem. But question was, there was no screening. When you speak in public, unknown person, they do not know me. How can they allow me without even a single question? Means what was my objective? I was not happy with this point, though they just allowed seeing that but they might have allowed everybody. If somebody comes from UP, somebody from Bihar, somebody from Hisar or somewhere, I heard that. I'm coming from there, that means coming from there. That's fine, you come. But after all, what's purpose? Question is that, yes, if you say just we came to support you, that is fine, that's okay. That is something you can say normal, very average. But after all, when there are say 35 or more speakers, 35 number I saw myself, and it will be more than 40 speakers, 50 speakers. Why you need so many speakers? First, if everybody has to deliver something same way, salute to you, salute to them, salute to the means this goes nowhere. I know this is not political one, this is not professional one, but there should be something. If people are there, they should get something from your speeches. If you just support them, just you are very nice, you are very this, without any leader, you are, that's okay, everybody's leaders. But I was just thinking, if my turn comes, what I have to speak to them. I had prepared myself for constitution only, because I had a plan in my mind to actually interact with them about constitution of this country, which is very important one. Because I am now concluding that people are actually having one problem, that they do not know constitution. They know now that there is a constitution, but they do not know what is constitution. That is very important. That point has to be grasped, has to be picked up. That engineer told me, he was there just to check me, that yesterday also came one IIT professor who is also talking about this and going here and there. I understood means if IIT and engineers come there, what they would speak. It's not a question of negativity someone, but question is, what is your purpose? Yes, dharna is one thing, protest is one thing, purpose. If a speaker comes there, what should a speaker tell them? If just to tell them CA is not good, it's against constitution, well, everybody knows it now. Generally, all citizens of this country know, and not only this country, but also other countries, everybody knows, except certain people who are following Modi and they are called Modi Bhats. Everybody knows that CAA is unconstitutional, NRC is irrelevant, and NPR has also no meaning. We know that. Everybody knows that. What is purpose then of speakers? I understand purpose of a speaker is to acquaint people, to generate awareness among them about constitution of this country. Because constitution is only document that can help you and me and everybody to know about ourselves. We do not know ourselves. Fact is that. Fact remains fact. You may say something, we may be in whatever profession, whatever society, whatever institution, and whatever level we have. We are all keeping ourselves off from knowledge of our constitution, and I can claim that 98% people belong to this category, that they do not know themselves. Because I am experiencing
I have been experiencing on Facebook and on other informative platforms that people have no intention. I have not even seen 2 or 3 postings or platform postings from thousands and millions of people talking about constitution, disseminate knowledge of constitution, not at all. It is really regretful that people of this country are not serious in this issue. This is very, very alarming, I can say alarming object for me, that how to teach people or how to conceive to them or how to convince them. I say convince them at least to know our real relevant book or document, constitution. Now at least they know that constitution is there, if not all, at least 25% people may be knowing. I cannot say 100%. They cry that they know it, actually they don't know it. And that is actually problem of people. We have our roots in a soil which has no water, which has no sun rays, and we want tree to grow. We want plant to come up. How can it be? Can it be? Never. You grow something without water, without sun rays, without photosynthesis effect, and you expect results, tree grows. I am not sure, and it can never be done like that. Example is Shaheen Bagh people. I'm not doing any criticism of them, but they are not organized to an extent. Destiny is concerned. What object actually do they have in mind? If they have only one object, that CA should be removed or repealed, that objective is different one. That objective is entirely directionless, because this has been notified. These people have been emotional, and all public is emotional. And when you are emotional, your mind stops working. You have no objective actually. Your objective is useless, meaningless, nameless. If objective is meaningless and nameless, you are failure. You cannot do anything. So we have to decide today, what does it mean if you protest or if you support both? If you say, I support this, I support CA, I support NRC, this is also stupid thinking. And if you say, I have to oppose this, that also is same, because you are having no final destination. What actually you are going to do? Government has said, we don't accept what you say. We have decided and we will move on this. I'm not saying government is our final answer. It's not. Government means parliament also. So what is your objective? If your objective is that we sit here forever, that is not practical point. No one can do that. Yes, it can be childish objective. You can say child basic is that every child thinks that way. If you don't do this, I will do that. If it's that one, that's also bad. Had I been given time yesterday, I would explain to them something which I missed anyway. No problem for that to me, but it's very important. मैं थोड़ा हिंदी में बोल दूं अब। भारत में जो चल रहा है आज की डेट में, आज की तारीख में, वो किसी से छुपा नहीं है। CEA, NRC, NPR, कश्मीर एटसेट्रा, जो भी हो रहा है बहुत दुखद है। दुखद इसलिए है कि हम भारत के लोग ना तो समझे हैं ना समझेंगे। कभी कभी समझ आ जाता है तो भावनाओं में बह जाते हैं। हम समझते नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है, अभी मैं शहीन बाग कल जा सका समय निकाल के कुछ, क्योंकि मैं अपने इंटरनेट पे लगा रहता हूँ इन्हीं कामों के लिए, क्योंकि फिर भी अच्छा लगता है कई बार कि जाकर देखें तो सही आखिर वहां हो क्या रहा है। क्योंकि टेलीविजन पर मानने बात को मैं नहीं मानता, और यूट्यूब पर भी आजकल कोई सही तरह से नहीं आ रहा।
सब अपनी अपनी चला रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं, जिसको जैसा तैसा दिखा रहे हैं। कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई निर्माणित कोई चीज कहीं भी नहीं दिख रही है। ऐसा कोई वीडियो आए या ऐसी कोई कहानी आए या बात आए कि लगे हाँ कोई मंजिल हमारी है। जीवन में मंजिल अगर ना फिक्स की जाए तो आप आगे नहीं जा सकते। रास्ते में जाएंगे, भटक जाएंगे, कभी इस तरफ चले जाएंगे, कभी उस तरफ चले जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि जाना कहाँ है। तो वही हम लोगों का हाल है, भारत वालों का। कहने को तो हम उद्देश्य शिकार रखते हैं संविधान की, संविधान का बहुतों को पता भी नहीं है। मुझे लगता नहीं कि देश के 1/4 आबादी से 25% लोगों से ज्यादा संविधान को जानते भी होंगे। वो जानते भी होंगे आखिर ये किस 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 बला का नाम है संविधान। और जो संविधान जान भी चुके हैं, बस इतना ही जान चुके हैं कि संविधान है। संविधान का सर क्या है, पैर क्या है, हाथ क्या है उसके, उसका माइंड क्या है, ये वो नहीं जानते। और यहां तक कि जो बड़े ऊंचे पदों पे भी लोग बैठे हैं, अपने आप को इसकी शपथ लेके बैठे हैं, वो भी नहीं जानते। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात की आज तक, निराश ही हाथ लगी है, निराशा। हम सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, हाहाकार मचा देते हैं, लेकिन बात को समझना नहीं चाहते। यही दुर्दशा है हमारी। हम भारत के लोग कहते हैं अपने आप को, हम भारत के लोग, हम कहते हैं हम सत्य निष्ठा से हमने ये फैसला लिया कि हम इस देश को, भारत को क्या बनाएंगे। जानते हैं ना आप, इस देश को हम प्रभुसत्ता संपन्न बनाएंगे, समाजवाद बनाएंगे, इस देश को हम पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, लोकतांत्रिक बनाएंगे, गणतांत्रिक बनाएंगे। और हम गारंटी देते हैं, सुरक्षित देते हैं, सुरक्षा देते हैं सबको कि आपको न्याय व्यवस्था मिलेगी, आपको स्वतंत्रता व्यवस्था मिलेगी और आपको बराबरी का हक मिलेगा, जिससे देश एक अच्छी दिशा में जाए, हर व्यक्ति अपनी इज्जत से जिए और एक आपस में मिलाव बने, एकता का समाज बने और हम उसमें रह सकें। हमारी उद्देश्य का, हमारी प्रेमबल तो यही कहती है। लेकिन सवाल वही उठता है कि हम समझा क्या, हम समझते क्या है। पढ़ लेना एक बात है, संविधान बनाने वाले बना गए, उनको ये कल्पना भी नहीं रही होगी कि लोग इसको कितनी वैल्यू देंगे, मान कितना देंगे, सम्मान कितना देंगे। अभी तक तो मैंने कहीं सम्मान देखा नहीं था। पिछले 70 साल में मुझे नहीं लगा कि लोगों ने इसे कोई सम्मान दिया। सम्मान तो आप तब देंगे जब जानेंगे। किसी से आप बात करते तो कहता था, अरे यार यहाँ कोई कानून वानून नहीं है, छोड़ो बेकार की बातें हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है। आप जिसको जानते नहीं कह दीजिए कोई कानून वानून नहीं है, आप जो जानते हैं बस उतना ही आपको मालूम है। ये बात बहुत सोचने की है। जब ये संविधान बना उस टाइम हम ये आशा करते थे कि लोग इसको नहीं जानेंगे, क्योंकि पहली बात तो उस टाइम ये इंग्लिश में था और इंग्लिश तो आती नहीं थी लोगों को। और जब ये हिंदी में भी आ गया या किसी और भाषा में आ गया तब भी लोगों को शौक नहीं था, क्योंकि शर्म आती थी संविधान पढ़ने में। संविधान पहले जानते ही नहीं है, और कोई बात भी करे तो यार आपको क्या करना है, आप खाना कमाइए, रोटी कमाइए, जॉब कीजिए और सोइए। सोच की बात है। और यही बात के लिए मैं कल जा सका वहां। मैंने जाके देखा कि आखिर देखा तो जाए, इतना शोर शराबा जो मच रहा है, हर रोज इतने वीडियो बन रहे हैं फेसबुक पर या आपके यूट्यूब पर या कहीं और, इतनी छोटी छोटी चैनल्स इकट्ठी हो गई हैं। टेलीविजन तो खैर आपको पता कुछ नहीं रहा, उल्टा ही बता रहा है, क्योंकि मैं तो टेलीविजन देखता नहीं हूँ आजकल। न्यूज़ तो मैं बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि मुझे उन पर विश्वास नहीं है। वो भारत के असली दुश्मन है। भारत के चैनल्स न्यूज़ के आज के तारीख में एक आध छोड़ दीजिए आप, नहीं तो सारे ही देश के दुश्मन हैं। अगर सबसे पहला कोई दुश्मन है, भारत की टेलीविजन चैनल्स आजकल दुश्मन हैं। वो इतनी अच्छी तरह से दुश्मनी उतार रही हैं जैसे युद्ध कर रही हैं पब्लिक से भी, अपने आप से भी, और देश की सबसे युद्ध कर रहे हैं वो भारत सरकार की तरफ से। इतने अच्छे युद्ध आजकल, वो सेनानी की जरूरत नहीं है। आजकल टेलीविजन चैनल्स आपकी है, आपके हाथ में पैसा है, आप भारत की जनता से युद्ध कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे योद्धा हैं। पब्लिक के माइंड को मारने के लिए, पब्लिक की सोच को खराब करने के लिए और पब्लिक का दिमाग खराब करने के लिए, भ्रष्ट खराब करने के लिए। खैर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो ऐसे ही रहेंगे, वो सुधर नहीं सकते। क्योंकि जब आदमी को खून मुंह लग जाता है पैसे का,
तो वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में कोई हो। एक बार पैसे की आपको बीमारी लग गई कि पैसा आना चाहिए, फिर आपके लिए भगवान भी कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता। आपको पैसे की आदत पड़ गई है तो ठीक है, आप अपनी दुनिया में मस्त रहिए। पैसा कब तक आएगा ये कोई नहीं जानता, क्योंकि पैसा भी कभी साथ देता है, कभी नहीं देता है। खैर मैं पहुंचा, मैंने कहा देखें एक शायद अवसर मिल जाए बात करने का लोगों से। देखा तो एक ऐसा हम उससे चलकर आए मेट्रो से, वहां तक करीब 15-20 मिनट का रास्ता, 15 मिनट तो था ही। सिंपल सा भाई, कोई डेकोरेशन नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई सिंबल नहीं कि इधर को जाएं उधर को जाएं, बोर्ड तक नहीं लगा हुआ। पूछते पूछते वहां पहुंच गए थे। तो जाकर देखा रस्से वस्से बंधे हुए थे, उसमें घुसे अंदर, आदमी रोक देते हैं, सिक्योरिटी चेक होगा जी। अब बड़ी अच्छी बात है, कर लीजिए भाई। आदमी वही नागरिक, कोई सिक्योरिटी की ड्रेस नहीं, कुछ नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, वहां पे अलग बैठी है पुलिस, वो आप सबको चेक करें। बहुत अच्छा लगा कि आप इतने होश में तो हैं कि लोगों को चेक कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई, बंदूक नहीं है किसी के पास, तलवार नहीं है किसी के पास, चाकू नहीं है। अच्छा लगा जानकर कि वो स्वयं इस बात का प्रबंधन कर रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं। फिर देखा चल के इधर उधर क्या हो रहा है। पब्लिक बहुत है, 15,000 से ऊपर लगी मुझे देखने की पब्लिक तो होगी वहां पे। एक हॉल सा बना हुआ है शामियानों का, जिसमें बैठे हैं महिला वर्ग, बच्चे वर्ग दूसरे, और पुरुष वर्ग इधर उधर सारे खड़े हैं, रेलिंग के इधर उधर दूसरी तरफ फैले हुए हैं। 10-15 मिनट घूमकर देखा वहां पे कुछ लोग टेलीविजन चैनल वाले खड़े हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ और खड़े हैं यूट्यूब वाले इधर उधर के। ठीक है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो। फिर मैंने कि सबसे पहले मुझे वहां जाना है, किससे बात की जाए, स्टेज के पास, वहां बातचीत करना चाहता हूँ। तो किसने कहा आप वहां जाइए, वहां पे एंट्री कराइए, पीछे गेट है, वहां उधर से रास्ता है। चलो पहुंचे वहां पे। तो वहां हमने देखा 3-4 महिलाएं बैठी हैं डेस्क पे, कुछ लोग खड़े हैं टेलीविजन वाले, मीडिया पर्सन्स, उनकी कुछ एंट्रीज चल रही हैं। मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये मीडिया पर्सन की एंट्री है, हम यहाँ से एंट्री करके कोई टिकट देते हैं, उसके बिना वहां नहीं जा सकते। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई, आप मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल कर रहे हैं एंट्री का। मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, पता तो लगे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बाकायदा रजिस्टर खोले हुए थे उन्होंने, उसमें लिख रहे थे नाम, एड्रेस वगैरह 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 जो भी होता है, आइडेंटिटी कार्ड। फिर मैंने पूछा जी मुझे भी कुछ चांस मिलेगा बात करने का, तो उन्होंने कहा आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। मैंने कहा कौन सा फॉर्म है, खड़ा रहा 10 मिनट, तो वहाँ वो बहुत बिजी थे। फिर एक साहब आए, पूछने लगे आप क्यों खड़े हैं यहाँ। मैंने कहा जी ये फॉर्म भरना है, तो भरिए आप। तो लेडीज कहती है नहीं मैं खुद भरूंगी। तो उसने कहा जरा आप ID कार्ड दिखाइए, उस साहब ने बोला। लो जी मेरा आइडेंटिटी कार्ड लो। तो मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का फेलोशिप। कहते आधार किधर है, मैंने कहा ये आधार से भी ऊपर है। कहते वो ठीक है लेकिन चलो खैर कोई, मैं लाया नहीं है, अगर आपको आधार से ले मैं चले जाता हूँ वापस, कोई बात नहीं। नहीं कोई नहीं। कहते आप किस ब्रांच के, मैं सिविल का हूँ। मैं भी सिविल का हूँ, मैं भी इंजीनियर हूँ। मैं बहुत अच्छी बात हुई। कहने लगे कल एक आए थे IIT के प्रोफेसर भी आए थे, वो फिर कहते ठीक है साहब आए होंगे, यहाँ जानता कौन क्या आप ये बताइए। कहते वो बात तो ठीक है। खैर मेरी एंट्री करी, फॉर्म कहते हैं जी अंदर जमा करा दीजिए, 29 नंबर दिया, अंदर चला गया। मैंने सोचा था शायद आधे घंटे में 15-20 मिनट में नंबर आ जाएगा, 10-5 मिनट बदल के चल देंगे यहाँ से, क्योंकि 4 बजे 4:15 बज चुके थे, मुझे ज्यादा टाइम नहीं था, मुझे 6-7 बजे तक वापस सोच सकता, क्योंकि रात को मैं नहीं ज्यादा रह सकता बाहर, मेरे को आंखों की प्रॉब्लम है। अंदर फॉर्म दे दिया, बैठा रहा कुछ देर, 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, 1.5 घंटा हो गया। वो आ रहे थे स्पीकर, कुछ बोले जा रहे थे, अंदर सब लोग डिसिप्लिन था, ऐसा नहीं है कि वो पटांग काम हो रहा था। लोग बैठे थे सीधे साधे कपड़े पहन के, लग नहीं रहा था कोई फंक्शन चल रहा है, ऐसा तो आम जनता बैठी है जैसे आम सामान्य जीवन में बैठते हैं। खैर इस बात को मुझे अच्छा लगा, चलो कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिखावा तो नहीं है। स्पीकर आ रहे थे, शोर मच रहा था, अपनी अपनी बातें कर रहे थे। कोई रोहतक से आया, कोई कहाँ से आया, कोई यूपी से आया, जैसे भी बिहार से आते हैं बोलते हैं। कोई हिंदू कह रहा था कि मैं हिंदू हूँ, कोई कह रहा था मैं योग। ठीक है, सब अपने अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज जो नोट की, देखिए 1.5 महीने से ऊपर हो गया, CAA क्या है, NRC क्या है, शायद आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ हर को मालूम है, हर एक व्यक्ति को मालूम है जो समाचारों में या जो वैसे भी कोई शौक रखता है जानने का। ऐसा इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। आप उस बात को बार बार करते रहें, एक बार करें, 1000 बार, हर रोज जो आएगा उसी के बारे में, इसके बारे में, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह गया उसको बार बार बोलने का।
सीए क्या है क्या नहीं हम जानते हैं, असंवैधानिक सब जानते हैं। 100 बात की एक बात है कि सीए इलीगल है, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कोई भी छोटा सा भी दिमाग रखने वाला कह देगा कि जब धर्म बीच में आ गया कानून में तो वो असंवैधानिक हो जाता है। ये बात कोर्ट भी कब कहेगा नहीं कहेगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक व्यक्ति की तरफ से, भारत नागरिक की तरफ से मैं ये कह सकता हूं आज की डेट में कि सीए असंवैधानिक है। इसमें कोई क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं जो हमें समझ नहीं आती। और एनआरसी और वो ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर का हुआ था 5 अगस्त को 2019 को, और आज 6 महीने हो चुके, पड़े हैं बेचारे लोग, मर के एक तरह से मरे ही पड़े, आत्माएं मरी पड़ी हैं उनकी, कुछ नहीं हुआ, बात आगे नहीं बढ़ी। जिस तरह गाड़ी का एक गियर लगाते हैं, गाड़ी का एक गियर लगाते हैं लेकिन एक्सेलेरेटर काम नहीं करता अगर गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं है तो वो एक गियर के बाद एक्सेलेरेटर ही नहीं पाया। सरकार के पास एक्सेलेरेटर नहीं है जम्मू कश्मीर का, तो 2 में गाड़ी कैसे आएगी? वही हाल है आज की सरकार का, आज की पब्लिक का। हमें साइन लिया गया वहां शाहीन बाग में कि आप कोई राजनीति के खिलाफ बात नहीं करोगे, आप चुनाव के बारे में कोई बात नहीं करोगे, आप सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात कर सकते हो, सीए एनआरसी वगैरह के बारे में, और ऐसी कोई बात नहीं करोगे जो ठीक नहीं है। ये बात भी मुझे अच्छी लगी, आप पहले ही अंडरटेकिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी होती है कि अगर कोई सोच तो है, जूता खा के ही सही, कुछ आ ही तो सही। आप जर्नलिस्ट को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जो आना चाहता है, बात करना चाहता है, उसको भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बल्कि होना चाहिए। इतनी जागरूकता तो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजर्स में, और मैं अच्छा लगता उसको, उनकी तारीफ कर रहा हूं। खैर, मैं बैठा रहा, जो मैंने देखा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, अच्छी तरह से लोग काम कर रहे हैं, और शायद अगर इसी तरह से पूरा देश काम करे किसी निस्वार्थ भाव से, तो देश बहुत आगे पहुंच जाएगा। वहां सवाल यह नहीं है हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। सरदार जी भी बैठे थे, हिंदू भी थे वहां पे, मुसलमान भी थे, दूसरे भी थे, लोग खड़े थे, अच्छी बात है, इसमें कोई नफरत की बात नहीं है। भारत की जनता है, और मैं शायद यही बात उनसे करना चाहता था। मैं चाहता था संविधान के बारे में कुछ बात करूं, उनको समझाएं कि आखिर आप चाहते क्या हैं। लेकिन वो मैं नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। 6 बजे मैंने उठ के पूछा उन 6 बजे, देखिए बताइए अगर मेरा नंबर आ सकता है कि नहीं। मैंने उनको बताया मेरा देखिए नंबर 29 नंबर था, तो वहां तो शायद 35 से ऊपर पेपर पहले ही पड़े थे। उन्होंने कहा ये घंटा तो कम से कम और लगेगा। अब वो 1 घंटा कह रहे हैं तो आप 1 घंटा और जोड़ दीजिए, तो बीच में वो खाना भी खा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, स्टॉप भी कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, फिर कर रहे हैं। तो मैंने कहा तो 8 बजे से नंबर आने वाला नहीं है पहले। खैर, मैंने माइंड में कैंसिल किया अपना प्रोग्राम और वापस आ गया कि चलो किसी और दिन देखेंगे, ये तो चलता है, कब तक चलता है। और हालांकि ये सुनने वाले भी शायद नहीं है, मैं नहीं समझता था कि वो लोग जो मैं उनसे बात करना चाहता था वो समझ भी लेंगे उसको। खैर, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मुझे अच्छा लगा उनका प्रबंधन, जो होना चाहिए उन्होंने किया। बहुत लोग लगे थे, बहुत, शायद एक सामाजिक बदलाव, देश के संविधान के बारे में समाज में अगर जागृति आ रही है तो ये खुशी की बात होनी चाहिए। सवाल ये नहीं है सरकार के खिलाफ है, किसके खिलाफ है, बात वो नहीं है। बात यह है कि वो जाग तो रहे हैं, जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जागना। और मुझे अच्छा लगा जानकर जब उस इंजीनियर ने बताया कि आईआईटी का भी कोई प्रोफेसर आ रहा है इधर, तो जा रहा है, ये भी अच्छा लगा। चलो कोई तो है, जहां लाखों मिलियंस इंजीनियर हैं हमारे देश में, इतने करोड़ों इंजीनियर हैं, करोड़ ना सही 50 लाख तो होंगे, अगर उनमें से एक भी आगे आ रहा है तो अच्छा लगता है। तो कोई तो है, चलो एक ही सही, बाकी तो सो रहे हैं। खैर, मैं वहां से वापस आ गया। सवाल ये नहीं खत्म होता कि मैं वहां से वापस आ गया। सवाल एक सोचने का है, पहली बात तो वो लोग क्वालिटी चेक नहीं कर रहे, बस फॉर्म भरा, आइडेंटिटी कार्ड देखा, ठीक है जी नंबर ले लीजिए। तो ये बात मुझे सही नहीं लगी।
इतने बड़े लोग बैठे हैं वहां, 15,000 से ऊपर, और वो भी महिला वर्ग। स्पीच वहां कोई कुछ भी दे दे, ये ठीक बात नहीं है। कम से कम पूछना चाहिए आप किस तरह की बात करना चाहते हैं। सारी बात सीए एनआरसी पे तो नहीं हो सकती, क्योंकि सीए एनआरसी में इतना कुछ नहीं है कि उसके लिए आप 15 मिनट या 10 मिनट बात कर सकें। है ही नहीं कुछ बात करने के लिए। बार बार बोलते रहिए सीए में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, देश टूट जाएगा, ये हो जाएगा। ये बातें बहुत हो चुकी। देश टूटेगा नहीं टूटेगा वो बाद में देखेंगे, पहले समझ तो लीजिए है क्या। संविधान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा वहां, बस संविधान संविधान कर रहे हैं। संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है, बचाइए। वी हैव टू सेव कॉन्स्टिट्यूशन। बचाना चाहते हैं बचाइए, पर जान तो लीजिए भाई, है क्या। आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, बीमारी को बचाना चाहते हैं, मर ना जाए तो पहले बीमारी जाननी पड़ती है। उसके लिए पहले जानना पड़ता है आपको बच्चा कौन है। आप बच्चे को भी नहीं जानते, बीमारी को भी नहीं जानते, कहते बच्चे को बचाना है, बच्चे को बचाना है, बच्चे को बचाना है। आई वांट टू सेव माय चाइल्ड, यू डोंट नो नेम ऑफ चाइल्ड, यू डोंट नो हु इज द चाइल्ड। आई वांट टू सेव हिम फ्रॉम डिजीज, यू डोंट नो। आई वांट टू प्रोटेक्ट, बट यू डोंट नो हिज दिस। एक बड़ा सवाल उठ जाता है। और ये सहनबाग की बात नहीं मैं कर, सबके जहां भी ये हो रहा है। घमंड मुझे इस बात का है, गौरव मुझे इस बात का है कि पहला आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन है। ये क्रांति कोई गलत शब्द नहीं है, ये क्रांति ही है, देश की बहुत बड़ी क्रांति, जिससे भारत की सरकार हिल चुकी है। और मैं भारत की सरकार को भी नहीं मानता इसमें, भारत की पब्लिक हिल चुकी है, भारत की जनता हिल चुकी है। ऐसी क्रांति जो जनता करे, जिसके साथ कोई भी गंध ना हो, नेता ना हो। गंध कहता हूं मैं नेताओं को, उनके अपने नेता, उनके सामाजिक नेता, वो स्वयं नेता, भारत की जनता का हर व्यक्ति नेता, जो वहां बैठा है या नहीं बैठा है, जो उनका समर्थन कर रहा है, जो उनके साथ है, वो सब नेता ही तो है। और वास्तविक में पूछा जाए तो नेता यही हैं, यही लोग नेता होते हैं। बाकी तो सब अभिनेता होते हैं, राजनीति के अभिनेता, फिल्मों के अभिनेता और बाकी कामों के अभिनेता। बाकी तो अभिनेता होते हैं। अब नेता तो हमें मिल रहे हैं, आप स्वयं नेता बन रहे हैं, और इससे ज्यादा परिचय क्या चाहिए आपका। आप वहां बैठे हैं, कितने दिन से बैठे हैं, कोई फालतू तो आप भी नहीं होंगे घर से। आप महिला हैं तो आप तो बहुत बिजी होंगी, रोटी भी बनानी है, बच्चे को भी संभालना है, सफाई भी करानी है, और बहुत कुछ करना होता है घर में। अगर आप उसको छोड़ के अगर ये सब काम कर रही हैं, देश के बारे में सोच रही हैं, तो मैं तो आपको सलाम करता हूं, सलूट देता हूं आप जैसी लेडीज को, महिला को, जिन्होंने भारत की महिला का सर उठा दिया, भारत की महिला का सर उठा दिया, और भारत के गंद कीचड़ राजनीतिक लोगों का सर झुका दिया। मतलब ये किसी काम के नहीं है, ये नेता जो अपने को नेता कहते हैं, और आप नेता उभर रही हैं देश में, बहुत बड़ी बात है। These bloody fool political leaders are of no use, and you are getting onto that level without having any political experience. Now you should not say that one should have political experience, because political experience got no meaning at all. And I reject all these bloody fool political leaders who say what they are. I should say bloody fool again and again, because they deserve this treatment. They have spoiled this country to a level of sewage tank. Smelling comes, offensive smelling coming from their characters, A to Z they are. And these ladies are great people. These ladies, these children, these volunteers, all these are great people. Modi may say anything, but I salute them, because they are real people of this country. We people are these people. We people, they are freedom fighters. Freedom for what? Freedom for these political leaders. These political leaders are our masters now. We have to remove them. This is what freedom is required from. हमें स्वतंत्रता हासिल करनी है इन लोगों से। ये लोग जो वहां बैठी है महिलाएं, सारी स्वतंत्रता सेनानी हैं, नए स्वतंत्रता सेनानी 2020 के। ये स्वतंत्रता सेनानी है 1947 के बाद, जिन्होंने इन कचरे से
इन काले अंग्रेजों से स्वतंत्रता पानी है, सीए भी नहीं पाना है इन्होंने वापस, इनको इन काले अंग्रेजों को हटाना है। असली मंजिल यही है, इन काले अंग्रेजों को हटाना है और जनता को वहां लाना है। मंजिल यही है, बाकी बातें हैं, बाकी सब बातें हैं। सीए तो 5 मिनट में हट जाएगा, एनआरसी भी 5 मिनट में हट जाएगा, कितनी देर लगती है उसमें, लेकिन हटाना इनको है, इन 550 जालिमों को, इन 250 दूसरों को, और 5500 जो नीचे बैठे हैं उनको हटाना है और वहां पे पब्लिक की आदमियों को लाना है। यह है असली आवाज। क्योंकि अब हम आहिस्ता आहिस्ता भारत के संविधान को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो 70 साल से हमने सोने में लगा दिया। We people of this country have been sleeping for 70 years. Now we are still getting up and thinking, what is Constitution? Just thinking what is Constitution is enough. We have to understand what is Constitution. And when we start understanding what is Constitution, we have to think how to protect that. And how to protect that, how to make a method statement for that, how to find a solution for that. NRC and CA and all this can be removed in 5 minutes. There's nothing in that. Once you are in power, you can do it. In one sentence, you can do it. No problem for that. But we have to remove this sewage of politics. This sewage, this kachra, this garbage of politics, we have to remove. That is what we have to understand. And actually, these people who are sitting there, Bharat ke log actually, not Hindu, not Muslims, these people who are protesting CNSA are thinking that internally, that we have to change management of this country. Because so far, management had been in hands of political rascals, and that must be removed. That power must be taken off from them, and power must be given to this ordinary public. This is solution. And until this doesn't come, there's no other way. These political killers, these political shooters, all must be kicked out from fake elections. They have come to power using fake methods in elections, using unfair means in elections, and they are sitting unofficially. They don't have any right to sit there, but they are in power. And with that power, they are fighting with public. They are killing people. They are warring with public. That is very bad. बहुत बुरा लगता है इन लोगों को जो गद्दी पे बैठे हैं, चोरी से डकैती से वोटों की, अपने आप को कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक ऐसा नहीं चाहती। वास्तविकता यह, पब्लिक बात करती है सीए की, एनआरसी की, लेकिन बोल नहीं पा रही वो क्या चाहती है, वो बोल नहीं पा रही। सड़क पे बैठना, फुटपाथ पे बैठना, वो एक अलग इशू है, अलग बात है, लेकिन वो क्या चाहते हैं ये वो नहीं बोल पा रहे, क्योंकि संविधान उन्होंने नहीं पढ़ा, संविधान इंजीनियर से नहीं पढ़ा, संविधान डॉक्टर से नहीं पढ़ा, संविधान 95 से ज्यादा % लोग नहीं जानते। और जब आप संविधान नहीं जानते तो आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आ रही हैं। यही एक बीमारी है देश में। कोई भी नहीं चाहता जो सीट पे है, कोई भी, आपको संविधान के बारे में मालूम हो, आप संविधान को समझें। आप संविधान को नहीं समझेंगे तो जूता ही पड़ेगा, जूता टैक्स का पड़ेगा, जूता एनआरसी का पड़ेगा, जूता सीए का भी पड़ेगा, और जूता बाकी नियमों का भी पड़ेगा। हर तरह से आपको खराब किया जाएगा और आप शोर मचाते रहना, सड़क पे बैठे रहना, कुछ भी चिल्लाते रहना। उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला, उनके दिमाग को कुछ नहीं होने वाला, उनके कानों को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने कान भी बंद किए हुए हैं, नाक भी बंद की है, आंख भी बंद किया है, मुंह भी बंद किया है। नहीं बंद किया है तो लूट खसोट बंद नहीं किया।
उसमें चाहे कोई भी नेता हो, सबके लिए मैं बात कह रहा हूं, किसी पार्टी के लिए बात नहीं कह रहा। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे, लुटेरे खुसेड़े, झूठ बोलने वाले, मक्कार, बदमाश। यही है राजनीति के नेता की परिभाषा। कोई परिभाषा जानता है तो यही जानता है। हम 5 साल तक रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। We always blame political leaders. We always blame government. We always say government has not done this. There's no government. There's no one to look after our problems. We always suffer by saying that for 5 years continuously. But when time comes, we don't care for that. This government in power is warring government. Warring. They are warring with people. First government in history of our country since 1947 that we have a government officially who is warring against their people. This is a war. Not bullet war. Not explosive war. War of minds. They are condemning people. They are condemning people. They are threatening people. They are scaring people. They are frightening people. If you don't do that, we will do this. Even Prime Minister is directly frightening people. Such a horrific stage we are having. But people are not understanding. People are not understanding. They are protesting, but they are not understanding. They have not decided what objective they should get. I am sure CAA withdrawal is not objective because it's very simple. Withdrawal is very simple, the problem, but whom you asking? Whom you are asking to withdraw it? A criminal? A person who has to force it? This means your objective is unclear. Organization is one part, successful protest is one part, all over nation this is happening, and also overseas this is happening. It's same pattern as happened in 370. People were happy, something has been done, but nobody knows what has been done. You know what happened to 370? Article 370. It's still not clear what has been done. It's still not clear. People say has been done, has been done, has been done. What has been done? Is Kashmir having normal life back? Are you happy with that? What has happened? No change, but complications. Kashmir is still not alive. 370 is not understood. People, somebody says it is scrapped, somebody says not scrapped. This means you are not clear. You have been misled by someone. And they want you keep in that situation, in that mental stage where you cannot decide. Just keep thinking, keep him. Because we are not used to read documents. If you are used to read documents, they cannot rule. If you know documentation, if you have a habit of reading, if you have had to know what is written, you are a responsible man in that case. If you do not read, you are a duffer. Simple. Ignorant. You want to keep off from facts, then believe in hearsay. Hearsay. I have seen thousands of people, hundreds of people posting on Facebook and elsewhere. Irrelevant posts. No meaning at all. There is no meaning behind these posts. Just Hindu, Muslim. Hindu, Muslim. Hindu, Muslim. Pakistan has done this, Pakistan has done that. What is all about? What do you want to say? Do you have a disease of writing Hindu-Muslim? Have you got psychic? No. You are paid for that. You are paid that people should just think of Hindu-Muslim. Are we so small nation? Have we come down to that level that we have to pollute our minds? You are polluting minds of citizens. You are polluting minds of kids. Hindu, Muslim, Hindu, save Hindu. Save Hindu. I don't understand this meaning. Somebody says, send them to Pakistan, all Muslims. Declare this a Hindu state, Hindu Rajya. I don't understand minds of this youth.
What do you want to say? Who allows you to say this? This means you are a sponsored one. You are not single mind, single degree of a thought. You are directed by someone and you are paid for that writing. Nothing else. You are just a dog to make money. Bhaw, 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 and make money. Nothing else. This is your character. You want to teach people? Just fighting this Hindu, Muslim, Hindu, Muslim, Hindu, Muslim. What's that, Hindu, Muslim? You don't have mind to think? Are you mad? You are mad. Your leader is mad. His own leader is mad. All leaders are mad. And that's why Shaheen Bagh is there. That's why many Shaheen Baghs are there. They are right. Because dogs like you are there. There are dogs who are barking but cannot do anything. You are dogs, you are barking, and your guru is asking you to bark further. But when somebody looks at you, you run away. You only abuse and run away. You don't have logical answers. That's what I'm saying. Shaheen Bagh is a signal. I do not consider now it's a protest. It's a legend. It's a legend. It's a symbol of revolution. Modi says, PM says, this is to break country. I say, no, you are there to break this country. This is to integrate this country. Shaheen Bagh is not Shaheen Bagh. It's declaration of realignments of society. It's a declaration that society is one. It's a declaration that whoever you call Hindu, so-called Hindu, Muslim, Sikh, Isai, etc., 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 are one, united, unity, one item. And that is Bharat ka log, people of Bharat, people of India. This is what our constitution says. Bharat ke log, hum Bharat ke log, we people of this country. This is integral design. This is a design which challenges government, which challenges those people who support government, because this government is not public government. This government is a fake government. This government thinks to change constitution, which cannot happen. And I'm sure one day you will get the news in the morning that they scrapped constitution. They can do it because they do not use this. They want just to beat people. Unfortunately, we people have no part in the struggle of freedom. Those who are living today, those people who are very well qualified, highly qualified, professionals, had no role in freedom struggle, and now also they don't want to struggle because they want money and luxurious life. That time also there are people who did not struggle. These people who are in power, they were there at that time. RSS was there, Hindu Mahasabha was there, and BJP actually same. They were there. They did not struggle. They just took opportunity of work done by others, blood laid by others, but they wanted to enjoy. They want something free of cost, free of sacrifices. They want that benefit. You died, freedom strugglers died, and same thing today. We have millions and millions and millions of professionals in all fields, but these people are fighting. Why only these people are fighting? Tell me, if these people are fighting all over nation and we change something, shall you not take benefit of that? If there is some possibility to change the constitution or to environment of government or public, that these rascals are removed from power,
these septic people actually, those who are citizens, come to these power centers. I come, you come, all come. Shall you not enjoy? Why are you sleeping now? I am sure, had you been alive at time of 1857 to 1947, you would have been befriended with British, because your nature is that. You are always bowing before power. You want only benefits. You do not want any sacrifice, because you are self-oriented. You are not nation-oriented. Such character is condemned. You may be very big engineer, very big doctor, very big chartered accountant, or very big whatsoever, but you are living only for yourself. You do not respect constitution, you do not respect public, you only respect your own. And that is what is the drawback with our system. Constitution is complete perfect document. To some extent, it may have deficiencies, but you cannot say in general that is deficient document. It's well organized document, well thought document. That's what I wanted to discuss with them, but I missed that one. No problem, I can find another day if I have time and I could reach the, because it's travel distance from my home, and my personal problems also. Well, this message they may get on Facebook. Generally, these people are not acquainted to on Facebook, because after all they are ladies, have too much work, maybe some job and then home job. So I can't expect them to invest time on Facebook, etc. Even then, message is there. They know what they want. They are sitting there with expressions that we want complete overhaul of political system. That's fact. But they missed something, we missed something, everybody missed something. Had we complied with constitution in the past, we would have got many solutions automatically. We missed that one. And that's what constitution says. I'm not saying, and you cannot say, this is what constitution, which is our real leader, that says. That's what I say. I amended Jana Gana Man to my mind. I'm writing, who is Bhagya Vidhata? Just like Jana Gana Man, Adhinayak, Bharat Savidhan, Bharat Bhagya Vidhata. Just try to understand. We say Bharat Bhagya Vidhata, but who is the Vidhata there? Who is Vidhata there? Bharat Savidhan is Vidhata there. Constitution of Bharat, Constitution of India is Vidhata there. That's why I'm introduced. What's wrong with that? Let us say something which is missed last time, or missed when this was composed. No problem. We are respecting this, we are honoring that. But simply writing is not sufficient. Application is very important. Application. Are we applying? That is what I wanted to communicate to these people. I make videos, I talk to you people, but I am regretting that people are not interested. People are not interested. No problem. If you are not interested, I am not going to stop this. One day, a time comes when you suffer. You think your duty is over, government will take care. No, government would not take care, because this is your job. Why do you depend upon government that they should take your care? Not at all, not at all. Because first of all, there is no government that is yours. This is certain political party government, and past also had certain party political government. Your government never actually appeared. Government of people never appeared. भारत के लोगों की सरकार कभी बनी नहीं. सरकारें बनी तो पार्टियों की बनी, दलों की बनी. दले का मतलब दलदल से है, स्लश से, डूब जाओगे, वाटर सैंड बॉइलिंग है. कभी भारत सरकार बनी नहीं जो भारत के लोगों की हो, जो संविधान की हो, जो संविधान के नाम की ना हो. संविधान के नाम की सरकार तो बनी, लेकिन भारत की जनता की मनों की सरकार, भारत की जनता की वास्तविक सरकार कभी बनी नहीं. क्योंकि गलती सरकार की नहीं, गलती संविधान की नहीं, गलती हम सब की है. हम सब गलत हैं. We all are at default, at wrong, and we are all guilty of that. We all are guilty. 100% people are guilty. हम अगर भावनाओं में भरेंगे तो मरेंगे ही.
भावनाओं में तो भा जाता है धर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए, वहां भावनाएं ठीक है, आप रखिए। भावनाएं धर्म में रखना अच्छी बात है, रखिए आप। आपको लगता है कि मेरा मन साफ हो जाता है, ठीक है, आपका मन साफ हो जाता है, आपके मन को शांति मिलती है, ठीक है, आपके मन को शांति मिल जाती है। जाइए, पूजा पाठ कीजिए, नमाज पढ़िए, गुरु का साहब पाठ कीजिए, चर्च में सर्विस कीजिए, कुछ भी कीजिए आप, उससे देश को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह आपका व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत बात है आपकी। आप किस धर्म की पूजा करते हैं, आप क्यों करते हैं, आप जानिए, आपका काम जानिए। लेकिन भारत की जनता को आपके धर्म से कुछ नहीं लेना। वहां भावनाएं ठीक हैं, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, ऊपर से वाले से कुछ मानिए ना मांगिए, आपकी मर्जी। लेकिन जहां तक देश की बात आती है, देश के लिए मर जाएंगे हम, लुट जाएंगे हम, ठीक है, अच्छी बात है, आप मरिए, आप लुटिए, उससे पहले देश को संभालिए तो सही। आप जैसे कहते हैं देश, देश आपका तभी तो है ना जब संभालेंगे उसको। आपका लिए देश कोई और तो नहीं संभालने आएगा। और हर बार क्या होता है, आप इस देश को किसी ना किसी दल के हाथ में दे देते हैं, जबकि दल नाम की कोई वैल्यू नहीं, दल नाम की कोई विशेषता नहीं, और सच पूछो तो कोई दल है ही नहीं। एक भ्रम है, एक भ्रम जाल में बांध दिया गया है हमको। दल दल, कांग्रेस दल, भाजपा दल, ये दल वो दल, ये दल है या दल दल है, अभी तक आपको समझ नहीं आया शायद। ये ना कोई दल है ना कोई बल है, ये सिर्फ दल दल है। ओनली सैंड बॉइलिंग, बॉइलिंग सैंड। There is no party in fact, this is all hypothetical. There is no party in fact, they're all businessmen. They are all selling, they are buying, and you are obliging them. That's the problem. You are consumer to that, you are customer to those people. They are selling their products and you are buying these products. They are very good salespeople. BJP is very good salespeople, very good sales shop. And Congress is inferior. This is political market. This is democracy market. This is vote market. Always sale, sale and sale. Give me one vote, I give you free water. Give me one vote, I give you free electricity. Give me one vote, I'll give you free food. Give me one vote, I'll give you free house. Give me one vote, I'll give you this free, that free, this free, that free, this free, that free. Give me one vote, I'll get you 15 lakhs. Give me one vote, I'll give you those jobs, how many jobs? Give me one vote, I'll get you pakoda. Give me one vote, I'll garbi hatao. This is one vote, I'll give you 60,000 per month, per year. 70,000 per year, sorry. What is this? Is it on sale? Just like go to some shop of sale, take one, take free. Take one and take one free. Or this was discount? Are we discounting sales? Are we selling this country on discount? I am surprised. Government has no money. Government says, what for you doing a budget? What's the purpose of budget? If you don't have money, you are looting Reserve Bank. You are looting all banks. You have no money. And you are saying we are granting this, we are giving this, we are giving that. From where will give? कहां से ला के देंगे आप? आपने एक ऐसा भ्रमजाल फैला दिया है गुंडागर्दी का, राजनीति की, कि हम आपको ये दे देंगे, हमें वोट दे दीजिए, हम मुफ्त पानी देंगे आपको, निःशुल्क पानी, निःशुल्क बिजली, 15 लाख निःशुल्क, मकान निःशुल्क। अरे आप निःशुल्क दे देंगे, कहां से दे देंगे? और हम निःशुल्क क्यों ले लें आपसे? हम जानते हैं कुछ मुफ्त में नहीं मिलता दुनिया में, सब जानते हैं फ्री लंच कहीं नहीं होता, तो आप फ्री लंच हमें कैसे दे सकते हैं? अरे लालच भी इतना होना चाहिए जो सही हो। अगर आप किसी को फ्री देंगे तो दूसरे से लेके देंगे, अपनी जेब से तो नहीं देंगे। ठीक है, जनता है, गरीब है, तो साफ कहिए कि हम उन लोगों को देना चाहते हैं जो इस तरह के हैं। बात कह देना फ्री पे देंगे। 2 करोड़ मकान हम दे चुके हैं, अबे भाई कहां दिए जरा बताइए, पूरा बताइए आपने कहां दिए? आपने जुपिटर पे दिए हैं, मैं जानता हूं, बृहस्पति ग्रह पे दिए आपने मकान। अब मुझे उसके लिए 75 करोड़ किलोमीटर जाना पड़ेगा,
उस मकान को लेने के लिए, बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर सेज he has delivered 2 crore houses to people, poor people. Where are those 2 crore houses? Did you try to locate there? Where are they? What sites? Yes, I have located them. They are on Jupiter planet. Go and I have been given one allotment letter that you get this planet, get this house on this planet, Jupiter, and that's I have taken possession of. If you want, you go and take possession. Congratulations to have a house on Jupiter. आपको बधाई हो बृहस्पति ग्रह के ऊपर घर मिलने की, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और धन्यवाद सरकार का, धन्यवाद देश की जनता का कि मुझे बृहस्पति प्लैनेट पे घर मिला। कमाल की बात है, हद होती है, झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। कोई कितना झूठ बोल सकता है, ये मुझे समझ नहीं आया था। मेरे ये पिताजी ने कहा था जब मैं छोटा था, ईमानदारी से काम करना, ईमानदारी से कमाना, और जब ईमानदारी है तो झूठ होता नहीं है, क्योंकि वो भी ईमान ही होता है। लेकिन आज झूठ की डेफिनेशन भी समझ आ रही है, सच की भी परिभाषा समझ आ रही है, और किस हद तक आप गिर सकते हैं वो भी समझ आ रहा है। एक आदमी होता था कांग्रेस में, उसने कहा था किसी को नीच, और मैं आज याद करता हूं उस आदमी को, तो कितना सही था वो, कितना सही था वो अपनी जगह। आप जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, शायद हमसे ज्यादा समझदार है वो आदमी। डरा तो नहीं, बाकी तो सारे कांग्रेसी डरते हैं, दुम दबा के भागते हैं। क्या कांग्रेस, शर्म आती है ऐसी कांग्रेस पे जो दावा करती है आजादी की अलाई में हम जिताए, हमने देश को आजाद कराया। आपने आजाद नहीं कराया, वो कांग्रेस कोई और थी, वो कांग्रेस देश की जनता थी। आप तो बिल्ली चूहे हैं, बिल्ली चूहे हैं आप कांग्रेसियों, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप देश की जनता का आप साथ नहीं दे सकते। बस थोड़े से आए, यूट्यूब पे आए, कहीं आए, या किसी अपनी उस पे आए और एक पीसी कर दी, हो गया काम, हो गया देश का सॉल्यूशन। आप भी शायद सत्ता के नशे में रहना चाहते हैं। जरूरी नहीं होता कि सत्ता हो आपके पास, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको भी सत्ता की खून लगा हुआ है, और इतना ज्यादा लगा हुआ है कि आप बिन अगर सत्ता आपके पास नहीं है तो आप लड़ भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते। आपको शाहीन बाग बनना चाहिए था, लेकिन आप नहीं बने। शाहीन बाग भारत की जनता बनी, भारत की महिलाएं बनी, भारत के बच्चे बने, भारत के गरीब बने। वो सब गरीब लगे मुझे, कोई अमीर नहीं लगा उसमें से। एक छोटे आदमी, छोटे समाज के छोटे लोग, हो सकता है लाखों रुपए उनके पास, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वहां कोई बहुत बड़े वीआईपी बैठे हैं, हाई प्रोफाइल लोग बैठे हैं। एक भी नजर नहीं आया, एक भी हाई प्रोफाइल नजर नहीं आया, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल होगा वो ये काम नहीं करेगा। उसके पास बहुत कुछ पैसा है, उसके राजनीतिक कनेक्शन है, पॉलिटिकल कनेक्शन है, करोड़ों की टर्नओवर होगी, उसको क्या लेना देना देश से? अंबानी को क्या लेना देश से? अडानी को क्या लेना देश से? किसी को क्या लेना देना है? और कांग्रेस के नेताओं को भी क्या लेना देना है, बीजेपी के नेताओं को भी क्या लेना है? सब अपनी बस्ती में है, किसी को कुछ लेना नहीं है। हाँ, ये जरूर कह देंगे ये गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं, ये लुच्चे लफंगे हैं, गोली मारो इनको, ये बदमाश हैं, देशद्रोही हैं। गोली मारेगा वो देश का भक्त है। नाथुराम देश का भक्त था, सही बात है, देश का भक्त था, वो गांधी को मारा उसने, वो देशभक्त था। और वो अफरीदी जिसने वाइस राय को गला काटा, वो देशद्रोही था, अफरीदी खान। ये देश के भक्त हैं जो कहते हैं गॉड से हमारा भगवान है, ये देश के भक्त हैं। अरे सही तो बात है, सब उल्ट गया। संविधान यूं पकड़ना चाहिए, यूं हो गया। प्रियम्बल उल्ट गया, सब उल्ट गया। संविधान के 395 आर्टिकल फाड़ के फेंक दिए गए। We have torn out constitution, we have upside down constitution, we have reversed it. These political leaders of Congress are rats, monkeys. They do not know what to do. Had they done something, there would have been no Shaheen Bagh. Had they done something, there would be no Modi. They are afraid, they are scared.
They cannot be called Congress because they are not Congress. They are political people. Congress is dead. Congress of 1947 does not exist because these are all pigeons and sparrows, potentialless people. दम नहीं है, इनमें नामर्द है सब. और बीजेपी वाले की तो बात ही, और तो गद्दार शुरू से हैं. आरएस वाले उससे भी गद्दार हैं. आर्य समाज की बात करते हैं, आर्यंस की बात करते हैं, जानते इसके बारे में कुछ नहीं है. बस देश पे कब्जा करना है. हमें देश पे कब्जा चाहिए. हमारे नीचे गुलाम बन के रहना पड़ेगा आपको सबको. इनके बाप का राज है पब्लिक के ऊपर. पब्लिक को क्या समझा इन्होंने? तुम्हारी नौकर है पब्लिक. अरे एक लात मारी सबने तो होश नहीं आएगा तुमको. गांधी का भूल गए लोग तो तुम्हारी जान नहीं मिलेगी कहीं पे. गांधी बचा रहे आज भी तुम्हें, याद रख लेना. Still today, Gandhi is saving BJP, Gandhi is saving RSS, Gandhi is saving criminals, Gandhi is saving all these people who are against public. Still be thankful to Gandhi that you are being saved. And they say Gandhi was criminalized, Gandhi was anti-national. They say that. Gandhi did nothing, he was a cheat. BJP people say that. You did that. As I said before also, there was a person, SAR worker, apologizer. He applied to George V and he signed independence. What a bloody nonsense. पागल हुए हम. हमारा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है. हमारा कोई मंजिल नहीं है. No destiny. What we have to do? No focus on anything. There is no director, no leader. Even Shaheen Bali is organized well, but there is no direction. They have no objective. If you just say CA be withdrawn, you think it's objective. It's not objective. What is your objective? You have good management, I understand. I appreciate that. You are having public management there. But where do you want to go? If you want to say, oh no, we'll sit here to death. No. Why do you think so? अगर आप कहते हैं हम यहीं मरेंगे जब तक ये नहीं होगा, तो ये तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ ना. आप मरना क्यों चाहते हैं? आप क्यों मरना चाहते हैं इनके हाथों से? इन बीजेपी वालों के हाथों से, बीजेपी की पुलिस के हाथों से आप क्यों मरना चाहते हैं? ये आपको क्या देंगे? ये लुटेरे हैं. ये क्या देंगे आपको? इन्होंने हम सबका वोट लूटा है, हम सबके बैंक लुटवाए हैं. ये आपको क्या देंगे? ये आपको कुछ नहीं देंगे. आपसे लेंगे, आपका वोट लेंगे, मीठी मीठी बातों में आपका सब ले लेंगे. ये 15 लाख को दे के आपके ख्याल ले लिए इन्होंने. 10 करोड़ जॉब दे के आपको सब कुछ ले लिया इन्होंने. आपको क्या दिया? पकौड़े की सेल, चाय की सेल, यही तो दिया ना इन्होंने. ये कभी किसी को देने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी दिया नहीं. जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने कुछ नहीं किया था, आप क्या करेंगे आपके लिए? अब तो ये गद्दी पे बैठे हैं, अब तो ये आपके बड़े हैं, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी. ये आपसे बात नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान होंगे तो बात करेंगे. ये आपसे बात नहीं करेंगे. आप सोच के बैठे हैं कोई आएगा आपसे बात करेगा. सौपन ले रहे हैं आप, सौपन ले रहे हैं. इसलिए अपनी मंजिल को तय कीजिए. वो मंजिल क्या है? वो मंजिल आपको सोचनी चाहिए. आपके माइंड में तो है, पर आप बोल नहीं पा रहे. It is clearly written in your mind, but I observed yesterday that these are very good people, people of this country, Bharat. I do not say by religion. हम भारत के लोग means भारत के लोग. That's it. And I bow before public of this country because I am one of them. हम भारत के लोग, we people of this country, भारत, हमने फैसला नहीं किया. We have not decided our destiny. This is problem. CAA is not destiny. Destiny is that who made this. That is dirty politics. Our destiny should be to curtail, to remove these political members, our fake representatives, झूठे हमारे
उम्मीद झूठे हमारे प्रतिनिधि, जिनको प्रतिनिधि होना चाहिए हमारे, लेकिन नहीं है। आप उनको अपना प्रतिनिधि कैसे बनाएंगे, ये सवाल आना चाहिए आपके माइंड में। अब आप भूल जाइए सीए को, भूल जाइए एनआरसी को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जब पावर में हो तो ये ऐसे 1 मिनट में आप हटा सकते हैं एनआरसी को। एक लाइन लाइए, कानून लाइए, हम इसको खत्म कर रहे हैं, बात खत्म, रिपील कर दिया। वहां पहुंचना है आपकी मंजिल। गाने गाने से नहीं पहुंचेंगे आप, वहां शेरो शायरी से नहीं पहुंचेंगे। कोई आकर कहता है हम आपको सलाम करते हैं, उससे भी नहीं पहुंचेंगे आप। अपना माइंड एक्सप्रेस करने लोग आ रहे हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पीपल आर कमिंग देयर टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, बट फॉर व्हाट? Just coming, delivering speech doesn't make anything. Jammu Kashmir failed because they are not taking any action. Government is enjoying. They are saying everything is fine there. I don't know what the meaning of fine. Only these people can tell. I don't understand meaning of fine. What's fine? They say life is normal there. And what is normal? I don't know. It's normal or it's tangent. What is this? God knows. And you know. For them it's normal. Everything is fine. Well, it's very easy to say everything is fine. क्या फर्क पड़ता है, बोल दो कुछ भी यार। कौन पूछेगा हमसे, कौन पूछने वाला है, किसकी हिम्मत? जो हमसे पूछेगा वो तो इज्जत होगी बस। If you question your international and police is puppet of Modi, and destination is, again I'm telling you, your destination is implementation of Constitution. Constitution in past failed to be implemented, and we are responsible for that. I and you all have been responsible not to allow implementation of Constitution except for those who are in power. Judiciary implemented for itself, executive implemented for itself, and legislature implemented for itself, not for you and for me. They don't bother about you and me. General articles are for them. If you read Union of Government articles, you will find for them. If you read judicial articles, all for them. For me and for you, only few articles are there, which they never allowed to be implemented. They whitewashed them, they painted them. They painted all those articles which relate to you and me, because citizenship articles relate to me and you, fundamental rights article belong to you and me, and election articles belong to you and me. They just whitewashed them, painted them, hide them under curtain, and you cannot see them because you are not interested, you had not been instructed, and that is a problem in this country. Problem is created by people, not by politicians. Politicians just help that, grease that problem, and we accepted that. That's the problem. People of this country are responsible themselves. No one else is responsible. They are responsible exclusively, I say. I blame to people of this country that we are responsible. We did not understand Constitution. We did not understand these politicians. We understood only thing is that they are in power. We go to them, please sir, do it for me. Why should I say him, please sir? Is he my sir? Is Prime Minister my sir or President my sir? No, he is not my sir. He is his own sir. He is sir for his party, not for me. My sir is Constitution. My excellency is Constitution. My highness is Constitution. My life is Constitution. My mind is Constitution. My heart is Constitution. My man ki baat is Constitution. My soul is Constitution. My prayer is Constitution. And my national God is Constitution. This is my Constitution. I have to consider it that way. भारत का संविधान मेरा है. मेरा अगर सर है तो भारत का संविधान है. मेरी आत्मा है तो भारत का संविधान है. मेरी आत्मा में भारत का संविधान होना चाहिए. मेरे मन में भारत का संविधान होना चाहिए. मुझे किसी राजनीति वाले से नहीं जानना संविधान क्या है. मुझे किसी जज से नहीं जानना संविधान क्या है. मुझे किसी कानून बनाने वाले विधेयक से नहीं जानना संविधान क्या है, क्योंकि संविधान में स्वयं जानूंगा.
मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें हेल्प की आवश्यकता नहीं, पढ़ना है बस, समझना है बस, एक आम आदमी की जिंदगी से मिला के इसको पढ़िए। जैसे सामान्य एक कायदा पढ़ा जाता है, CAT, CAT, NRAT, RAT, संविधान भी उसी हिसाब से पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे जुडिशरी के एंगल से, लेजिस्लेटिव एंगल से, आपको कभी समझ नहीं आएगा। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री इज वेरी क्लियर बिकॉज वी पीपल हैव डन इट। यस, इंग्लिश इज डिफिकल्ट, आई नो, और हिंदी इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बट what is content is there, it's not difficult. You have to spend some time, and if you have some time, you shall understand this. Simple. Don't depend upon anybody to understand this constitution. This is not havoc. You can understand physics, you can understand chemistry, you can understand trigonometry, you can understand calculus, you can understand biology, you can understand anatomy, you can understand law, you can understand a chartered accountancy. You cannot understand a document which is very simple. Very simple. आप समझ सकते हैं, बड़ा आसान है। मत डरिए कि उसमें इंग्लिश में बहुत मुश्किल लिखा है, मत डरिए कि हिंदी में बहुत मुश्किल लिखा है, कोई चिंता नहीं उस बात की। उसके एसेंस को समझिए, उसके अंदर वो क्या कहना चाहता है उसको समझिए। आप जनगण गाते हैं कि नहीं? उसका मतलब आपने भी नहीं समझा आज तक। गाते रोज हैं, स्कूल में बच्चे गाते हैं, और कोई फंक्शन होता है तो सब गाते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं समझता, कोई समझना भी नहीं चाहता। इसीलिए प्रश्न करते हैं फालतू के कि भाग्य विधाता कौन होता है। आपने कभी सोचा उसमें सिंध क्यों लिखा है? सिंध इसलिए लिखा है कि वो स्वतंत्रता से पहले का बनाया गया था, उस टाइम सिंध हमारा हिस्सा था, लेकिन हम 72 साल तक चलाई जा रहे हैं उसको। सही है क्या ये? सोचिए आप, क्या सिंध भारत का हिस्सा है? अगर सिंध है तो कराची क्यों नहीं है, ढाका क्यों नहीं है? फिर वो भी होना चाहिए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। बस गाए जाओ तोते की तरह, और कहे जाओ कि हमारा अधिकार है, हमें अवॉइड करना है, इसको ऑनर देना है। मैं सिंध को ऑनर क्यों दूं? आप सोचिए, हमारे राष्ट्रीय गान में सिंध लिखा है, मैं उसको ऑनर क्यों दूं? मैं नहीं दूंगा। मैं उसको ऑनर दूंगा जो मेरे देश का हिस्सा है। इसमें क्या गलत है? मैं मराठा को क्यों ऑनर दूं? मैं गुजरात को क्यों ऑनर दूं? पंजाब, वो जनगण जय भारत, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, पंजाब को ऑनर दे दो, गुजरात को ऑनर दे दो, मराठा को ऑनर दे दो, बंगाल को ऑनर दे दो, बाकी भाड़ में क्या सब? बाकी हमारे राज्य नहीं है, उनके मूल्यांकन नहीं है, हमें उनको भी देना चाहिए, तभी तो हम अपने को जानेंगे। अगर स्कूल में गाया जाता है गान, तो उस बच्चे को सब पता नहीं होना चाहिए क्या? और भाग्य कौन विधाता है हमारा, ये पता नहीं होना चाहिए। कौन बताता है कि आपका भाग्य विधाता कौन है? किस बच्चे को मालूम है? जनगण गाता है उसको भी मालूम नहीं है। भारत का कौन भाग्य विधाता है? कौन है भारत का विधाता? समझना नहीं चाहिए इस बात को। अरे आपका संविधान ही आपका भाग्य विधाता है, और कौन भाग्य विधाता होगा आपका? इस बात को नहीं समझ आती आपको? अगर आपका भाग्य विधाता संविधान नहीं है तो आपने बनाया क्यों था? इसकी जरूरत क्या थी? आपका भाग्य तो पहले चल रहा है। ये बात बहुत जरूरी है समझनी। ये बीमारी की डायग्नोस करना चाहते हैं हम फेल किधर हुए हैं? यहां हम फेल हुए हैं। We fail to understand everything in our constitution. We fail to understand ourselves what we are. We are only chanting, only speaking, and doing nothing. We are not understanding what we are doing. Just like parrot, we chant every day. We have to honor this national anthem. Yes, we will honor it with both salutes, not single salute. But for what? Shall you honor Sindh? Why should you honor Sindh? And shall you honor Punjab, Gujarat, Maratha, Bengal? Why only all this? Why not all? And what does mean of Bharat Bhagya Vidata? What's the meaning of that? Should we not understand that? Our children who chanted daily in schools must know what is fact. Why do you hide that fact? Who analyzes this? Who thinks on this?
Okay, these political parties, forget them, forgive them. They have no business as such. Their only business is vote bank. But my business is not bank. I have to think. If there is something missing or it was not available that time, we can reassemble it. What's wrong with that? That's what I'm saying. We have to awaken ourselves. We have been sleeping. We have to open our eyes. If we cannot open our eyes, we cannot see facts. We just live in world of horizon. Oh, horizon. We are living in world of mirage. Oh, that's mirage. See, there's water. I go there. I don't find water. That's mirage. And, oh, this is a skyline. I go there. There's no skyline. That's horizon. Are we living in world of horizon? Or we are living in world of mirage? No. We are living in real world. Real world must be respected, must be honored properly. If Article 51A says that you have to abide by Constitution, you abide. But before abiding Constitution, you must know what is Constitution. You must know why it is. You must know what is content in this, what is applicable to you. Only then you really abide by this. Otherwise, you are in flip-flop mode. You don't know what you are doing. And also it says you have to honor national flag. Okay, that's fine. You have to honor national anthem. And you have to honor those ideals which were taken up by freedom fighters for national struggle. Actually, you are not honoring that. You are not honoring national anthem. You are chanting it only. You are not understanding what ideals of those. You are just saying that. And you are saying we laid our lives for nation. We will lay, but we are not ready to lay. If we cannot digest public, if we cannot digest protest, if we cannot respect voice of people, if we don't respect people, how can we say we can live lives? We can live our lives? No. You can't digest human being. You are not ready to accept public. You are showing them, you are bulleting them. How can you say you shall lay lives for this nation? Are they not part of this nation? They are part of this nation. Very much part of this nation. More than you. Because they have no greed in them. You fight for elections. You fight for seats. They are not fighting for seats. They are fighting for better status of this country. They are fighting for their better status. There's nothing wrong with that. Everybody has a right to improve. You can improve. You can win posts. They cannot improve. They have no right to say. They have every right to say. That's what I'm saying. Public is sleeping, has to awaken. These leaders want you to sleep forever, but you have to awaken. You have to awaken. No other way. If you have other way, you will suffer. This country belongs to you and to all you. And if somebody touches you, he has no right to touch you. You must have that power of electrical current which transfers electric shock. You must have a power to short circuit that person who touches you. That person must be electrocuted by your finger. You must have that power. You must have that power, in fact, that one who touches you must be set on fire by electric current. That power you must have. Why? How someone can encourage himself to fire you? To give you bad names? On what basis? On what basis he can do that? क्या अधिकार है किसी को आपके बारे में कुछ कहने का, गलत बात कहने का, आपको देशद्रोही कहने का, आपको गद्दार कहने का, आपको आतंकवादी कहने का? किसको क्यों अधिकार है? किसी को नहीं है. किसी को कोई अधिकार नहीं है जब तक कि आप ऐसे नहीं हो जाते. चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, पुलिस हो या कोई भी हो, किसी को कोई अधिकार नहीं है. यह अधिकार आपका संविधान आपको देता है.
पढ़िए, समझिए। अगर कोई आपको आतंकवादी कहे, कोई आपको देशद्रोही कहे, इसका मतलब वो आपको शक्तिहीन समझता है। वो जानता है कि आप दबे हुए हैं, आपको कुछ भी कह देंगे और आप सह लेंगे। आपके अंदर वो शक्ति नहीं कि कोई आपके ऊपर उंगली लगाए तो उसकी उंगली जल जाए। वो शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। क्या वो शक्ति भारतीय नागरिक में नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? आपके अंदर इतनी बल होना चाहिए कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी आपको छूना चाहें तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स हो जाए, जल जाए वहीं। वो शक्ति होनी चाहिए। हमारा बाप तो नहीं है प्रधानमंत्री, हमारा मालिक तो नहीं है। हमने 5 साल के लिए उसके आदमी को वोट दिया तो वो बैठा है वहां। उसके आदमी को वोट दिया, अपने आदमी को नहीं। अगर अपने आदमी को देते तो शायद कुछ और बात होती। अब यहां अपना आदमी, हमारा आदमी कौन है यह आपको तय करना है, मुझे नहीं। मैं अपने आज तय करूंगा, आप अपना तय कीजिए। और जिस दिन ये आप बात समझ जाएंगे उस दिन ये धरने की जरूरत नहीं है आपको। और मैं तो अब भी कहता हूं इस धरने की जरूरत नहीं है। उनको धरो, जिन्होंने आपको धरने में बैठाया उनको बैठाओ धरने पे, तब आएगी स्वतंत्रता। वो लोग कहें भगवान ये मेरी जनता मुझे बचाओ, वो लोकतंत्र होता है। हमसे बनने वाले, हमारे पैसों पे पलने वाले, हमारे पैसों पे ऐश करने वाले, हमारे वोट से बनने वाले दादा समझ गए अपने आप को, डॉन समझ रहे हैं अपने आप को। फिल्मों में दिखाते हैं स्मगलर हेड है पूरी गैंग का, जैसा कहता है वही होता है। मेरे पैसे पे पलने वाले, मेरी मेहनत की कमाई खाने वाले मेरे को आंखें दिखा रहे हैं और मैं आंखें देख के यूं खड़ा हूं, खाना जाए मुझे। नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। याद रखना, जिंदगी छोटी सी है, इज्जत से जी लोगे तो अच्छे रहोगे। ना उनकी जिंदगी लंबी है ना हमारी जिंदगी लंबी है। आप सफर करें, अच्छी बात नहीं लगती मुझे। आप भारत की जनता है, मैं भी जनता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगा सच पूछो कि लोग इस तरह बैठे हों सड़क पे, और वो भी महिलाएं, उनके भी बच्चे हैं, सर्दी का भी मौसम है और गर्मी का भी हो तो क्या, किसको फुर्सत है इन कामों के लिए? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तभी है वो। उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं। इस बात का दुख है मुझे। किस बात की सरकार, किस बात का प्रधानमंत्री, किस बात का राष्ट्रपति, किस बात का कोर्ट, किस बात की न्यायपालिका, किस बात का लेजिस्लेचर, जब जनता के नहीं सुनते आप। ये तो हजारों लाखों हैं, एक भी अगर करे तो भी आपकी ड्यूटी है उसकी बात सुने, क्योंकि सरकार वही होती है जो जनता का ख्याल करे, जनता की तकलीफ सुने। और आपके अंदर इतना ऊंचा चढ़ गया दिमाग, आप अपने आप को भगवान समझ बैठे। कोई भगवान नहीं इस दुनिया में। नशा उतना करो जितना हजम हो जाए। रोटी का नशा भी हो जाता है, ज्यादा खाने से भी हो जाता है। रोटी भी उतनी खाई जाती है जितनी हजम हो जाए। पानी भी उतना पिया जाता है जिससे यहां तक ना आ जाए। इस बात को समझ लीजिए। अगर आज मेरा नागरिक, मेरे देश का नागरिक हो, कोई भी क्यों ना हो, भारत का है, अगर वो सड़क पे है, औरतें हमारे देश की, महिलाएं वर्ग, तो हमें शर्म आती है। मुझे भारत के नागरिक इसलिए मैं गया था वहां देखने कि आखिर ये हो क्या रहा है। बस 2 बातें अच्छी लगी। एक तो वो सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, किसी के ऊपर मोहताज नहीं है, और वो फ्रीडम दे रहे हैं बोलने की, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें मैं खुश नहीं हूं। वो दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्क्रीन करना जरूरी होता है। बहुत अच्छा होता है स्क्रीन करना। ये भी कह रहे हैं कि चुनाव के बारे में बात नहीं करेंगे, अच्छा लगा, मत करो, चुनाव की सभा नहीं है वो। आप इन विषय पे बात कर सकते हैं, अच्छा लगा, वो विषय उसी का है। आप किसी को बदनाम नहीं करेंगे, किसी के बारे में व्यक्तिगत बात नहीं करेंगे, ये भी अच्छा लगा। लेकिन फिर भी कोई भी आ जाए, बोलने दो, ये भी तो ठीक नहीं है। मुझे भी ना बोलने दो, मैं तो कहता हूं कोई बात नहीं है, पूछिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। शायद
वो लोग इस चीज को नहीं समझ पाए हो। दिल का साफ होना भी बहुत अच्छा नहीं होता है। उनके माइंड में ऐसी गंदगी नहीं है, तभी वो फ्री कर रहे हैं, जाइए ठीक है। 35-40 लोग थे वहां बोलने वाले, मुझे समय नहीं मिला, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है। मैंने सोचा था शायद 10-15 मिनट में, आधे घंटे में नंबर आ जाएगा, 15-20 मिनट में लोगों से बात करके मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे इस बात की भी कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो वीडियो में बोलता ही रहता हूँ। कोई पढ़े ना पढ़े, सुने ना सुने, वो आपकी मर्जी, आपका धन्यवाद। पढ़ते हैं तब भी, नहीं पढ़ते हैं तो मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरा कर्म ही कर सकता हूँ, फल का तो मैं इच्छा नहीं रखता, वो आपको देखना है। आप मेरे दोस्त हैं, मेरे देश के नागरिक हैं, आप अगर देखेंगे हो सकता है आपको समझ आ जाए, नहीं देखते तो कोई बात नहीं है। मैं कोई लाखों की अपनी सब्सक्राइब नहीं चाहता और मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम हंसने मजाक करने का नहीं, मैं जोकर नहीं हूं, मैं कॉमेडियन नहीं हूं, मैं कहानी नहीं सुना रहा, चुटकुले नहीं सुना रहा आपको। मैं क्या आपका एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहता, मैं तो बोर करना चाहता हूं आपको, क्योंकि जो बोर किया जाता है वो असलियत होता है। जिंदगी में बोर होना बहुत जरूरी है असलियत आनंद लेने के लिए। आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो बोर ही होता है जब तक वो समझ ना आए, और जिस दिन ये संविधान आपको समझ आ गया, आपकी बोरियत भी खत्म हो जाएगी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जो क्योंकि मैंने मार खाई है, मैंने जिंदगी में मार खाई है संविधान ना समझ के, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। संविधान जो हमें देता है वो हमें समझ नहीं आता, और हमें राजनीतिक पार्टी वाले और ये जितने ऑफिसर बैठे हैं सरकार में, हमें उल्लू बना देते हैं, हम बन जाते हैं। और इस देश में आपको कोई कुछ नहीं बताएगा, याद रख लेना। आप चाहे पढ़े लिखे हैं, या आप मजदूर हैं बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, या बड़े प्रोफेसर भी हों, बड़े डॉक्टर इंजीनियर भी हों, आपको कोई कुछ नहीं बताएगा। हाँ, आपके फील्ड में आप हैं, वो आप पढ़ के आए हैं, आपने ट्रेनिंग ली है, वो आपको आता है, लेकिन क्या फील्ड ही सब कुछ होता है? बाकी चीजें नहीं होती हैं। समाज भी तो एक है जो आपको नहीं मालूम, उसके बारे में तो आपने स्टडी नहीं की, संविधान के बारे में आपने स्टडी नहीं की, और बहुत सी चीजें इसके बारे में आपने स्टडी नहीं की, लेकिन जिंदगी में सामने आती हैं। समाज को कैसे हैंडल करना है, अपने अधीन जो आपके वर्कर हैं उसे हैंडल करना है, और कैसे हैंडल करना है, यह आपको समझाएगा क्या? आपको घर में खाना कैसे बनाना है, आपको नहाना कैसे है, आपको लोगों से हंसी मजाक कैसे करना है, ये कोई समझाएगा आपको? कोई नहीं समझाएगा, ये स्वयं सीखना पड़ता है। वो आपके सीखे क्या? आप नहीं सीखे। आप हम आखिर किसी प्रधानमंत्री की स्पीच क्यों सुनते हैं? क्या कारण है? बड़ी वैल्यू से, बड़ी आशा से प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की स्पीच सुनी जाती है, क्यों? कभी सोचा आपने? आप कहेंगे जी वो है इसलिए सुनते हैं। आपको क्या मिलना चाहिए उस स्पीच से, उनके भाषण से, उनके संदेश से आपको क्या मिलना चाहिए? कभी मिलता है? मैं इनकी बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूं जो पहले भी हुए हैं, पहले हुए हैं। मैंने बहुत स्पीच सुनी है इनकी, और मेरी आदत थी, शायद मैं पढ़ाई में पीछे इसलिए रह गया था कि मैं ज्यादा समय इन चीजों में लगा देता था। एग्जाम के टाइम में भी मैं सुनने चला जाता था, चलो चलते, इंदिरा गांधी आती है उसकी भी सुन लेते, चरण सिंह आते हैं उसकी भी सुन लेते, कोई जगजीवन राम आते हैं उसको सुन लेते, और ABCD अटल बिहारी वाजपेयी जो भी आते हैं उनकी स्पीच सुन लेते। शायद बीमारी थी मुझको सुनने की, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं गेम्स नहीं खेलता था, कभी खेलने नहीं जाता था, तो शायद एंटरटेनमेंट मेरा यही होता था। फिल्म देखने के लिए पैसे नहीं होते, चलो इनकी स्पीच ही सुन लो। लेकिन समझ आती थी उस टाइम के हिसाब से, समझ आती थी क्या कहते हैं ये, और ये भी समझ आने लग गया था इनको ये नहीं कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था, और ये भी समझ आता था कि इंदिरा गांधी ने फैसला लिया है, नहीं लेना चाहिए था, ये लेना चाहिए था। इतने कॉमन सेंस डेवलप हो चुकी थी। लेकिन संविधान मैं भी नहीं जानता था, लॉ क्या होता है मैं नहीं जानता था। हम यही समझते थे प्रधानमंत्री सब कुछ कर सकता है। हमारे घर वालों ने नहीं बताया, हमारे पिताजी ने सब बताया नहीं इसके बारे में, और जो बुजुर्ग थे वो बेचारों को पता नहीं तो क्या बताएंगे। वो पुराने लोग आजादी के समय के, स्वतंत्रता के समय में, उन्होंने को पता नहीं था कि सब क्या होता है, बस जो सुन लिया बीबी उससे, ऑल इंडिया रेडियो से सुन लिया, ऑल इंडिया रेडियो था उस टाइम, या किसी और से सुन लिया, सिलोन से सुन लिया, कहीं से भी न्यूज लेके इधर उधर की बातें करके, ये अखबार से पढ़ा, इधर से पढ़ा, मतलब खपलप थपलप थपलप जो आया सुना दो। और बच्चों को, यार तुम पढ़ाई करो जाके, तुम्हें क्या लेना है इससे, तुम्हें तो वोट भी नहीं है, तुम्हें क्या लेना है, हम करना बजाओ, ऐसा होता था। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में ये कमी रही है कि हम जिस देश में रहते हैं उसके बारे में क्या तंत्र है, क्या मंत्र है, क्या गणतंत्र है, उसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है।
बस जनगण गालो बहुत है या अपनी प्रार्थना गालो बहुत है। बच्चे को क्या पता, बच्चा बच्चा है, इसीलिए तो पढ़ने जाता है वो कि बड़ा बन जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। आज हमें सोचना पड़ेगा। अब समय आ गया है, आजादी मिले बहुत हो गए, अब हम ये आजादी के गीत नहीं गा सकते। हमें अब बचाना है अपने आप को कि कोई दूसरा आके ना बैठ जाए। बड़े बड़े देश हैं जो उनकी हिस्ट्री है, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, वो बेचारे कहीं के नहीं होते, हर एक को मानते जाते हैं। हम नहीं चाहते। हम भारत के लोग भारत को सुरक्षित देखना चाहते हैं अपने हाथों में, नेताओं के हाथों में नहीं। अभी तक भारत की जनता के हाथ में नहीं आया है, भारत के सामान्य वर्ग के हाथ में नहीं आया है, यह भी एक सच्चाई है। अभी तक एक गलत फहमी में रह रहे हैं हम 1947 से आज तक, ऐसी गलत फहमी जो हम भी नहीं समझ पाए कि ये गलत फहमी है। बिना बात हम किसी भी नेता के पे चल देते हैं, बिना बात। यही है, यही आया है, यही रोशनी है, यही रोशनी है। आज भी वही हाल है। चलो, वो जवाहरलाल था, मान लिया उस टाइम शायद नेता नहीं थे, गांधी चले गए थे और बाकी मैनेज नहीं हो पाया था। इंदिरा गांधी ने बहुत राज कर लिया, ठीक है, उसके बाद दूसरे भी आए। लेकिन आज भी अगर हम सोचें ये है तो मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन नहीं है। यही है हमारी गलतफहमी और यही है हमारी बीमारी। किसी को भगवान बना देते हैं, है वो शैतान, उसे भगवान बना दो। हम शैतान में और भगवान में फर्क नहीं कर सकते, इतना ये नहीं है हमारे अंदर। यही दुख है मुझे। हम मर जाएंगे मानते हैं। लोग तो यहां तक कहते थे यार क्यों फेसबुक से आपको क्या लेना है, बुढ़े हो गए, मर जाओ, घर में बैठो जाके। हम बुढ़े हो गए, ये जमान हमें सिखाएंगे, जिनको खुद नहीं पता वो हमें सिखाएंगे। बुढ़ा क्या होता है? बुढ़े आप हैं, आप दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहे। हम बुढ़े नहीं हैं क्योंकि हम दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं आदमी शरीर से बुढ़ा होता है? दिमाग से बुढ़ा होता है। भगवान ने दिमाग बनाया, उसके बाद यह शरीर बनाया कि दिमाग चलने के लिए शरीर चाहिए। और दिमाग में आपके भूस भरा है, दिमाग में किसी के में मोदी भरा है, किसी में राहुल भरा है, किसी में कुछ भरा है, किसी में कुछ भरा है। तो दिमाग में तो आपके मस्तिष्क है ही नहीं, फिर आप किसकी बात करें, किसको बूढ़ा कह रहे हैं? बूढ़े आप हैं क्योंकि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। युवा, हमारा देश का युवा बूढ़ा है। हमारे देश का पढ़ा लिखा अनपढ़ है। हमारे देश के आम नागरिक नहीं है, गुलाम है। हमने अपने आप को ऐसा ढाल दिया है कि जो है ठीक है यार मान लो, ठीक है यार मान लो। ये गांधी भी कहता, सुभाष भी कहता, तो आज भी आपके ऊपर क्योंकि जॉर्ज 7 बैठा होता या एलिजाबेथ बैठी होती, आज भी। धन्यवाद दो उनका कि वो वहां नहीं है, लेकिन दुख मनाओ कि जो वहां है वो नहीं है। बात को समझिए। रोटी खाना कमाना एक बात हो सकती है, लेकिन जूते मरवा के खाना, बेइज्जती करवा के खाना, गालियां खा के खाना अच्छी बात नहीं होती। We have to understand our identity. We have to understand where do we stand. We have to understand where we have come from. We have to understand where we have to go. We have to understand who these are sitting in power. Are they our people or they are people of other source? That we have to understand. We don't have mind to understand that. That is our bad luck. After all, why do we respect them? And why don't you respect our constitution, which is our head, which is our king, which is our leader, which is our directors? Everything constitution is, which we did not know so far. Since 1947, they did not understand this. And now we understand there's a book that's called Constitution of this country. We only know this. And some people have started knowing preambles. More than that, they don't know, or they know Article 14 or 15. Only something is told by someone and that and this and that. Otherwise, we do not know anything.
That is a real problem. If you want to live with respect, with regard, we have to first respect ourselves, self-respect, and then we have to respect Constitution, and then only we can respect this nation. Otherwise, we are demolishing our nation, we are dismantling it every day spiritually, physically, and we will completely destroy it one day. It's our duty to protect it. We cannot leave it to leaders, these so-called bloody leaders. It's not our duty to think of them. We have not to keep them in our minds, this leader, this leader, this leader, this leader. No. We have to keep in our mind that Bharat public is leader. Every citizen is leader. These are our servants, no leaders. This is what my constitution tells me. You are a leader of my country. Bharat has 140 crore leaders, and these political so-called servants, they are not leaders, you are leaders. Reverse, you also reverse if they reverse. They have reversed constitution, you reverse them. Simple. Don't say, no, this is not permissible in 2020. You have to protect yourself. You have to defend yourself. Your umbrella you have, they don't have. You have your umbrella. Kick them if they need kick. Ask them to shut up if they required so. He is not my master. President is not my master, and Prime Minister is not my master, and ministers are not my master. I am honor of this country. Every citizen is honor of this country. I have to say that with pride. I am honor of this country because I am citizen of this country. Constitutional citizen, not NRC citizen, constitutional citizen. Not CA, I am citizen. I am citizen of Bharat, India. That you must keep in your mind, and seriously, not in joke, not in laughing, no. Seriously, you have to think this, just like you are a student of science, you think physics, chemistry seriously. It's a part of science, social science, that citizen is honor of this country, and these all are hired people, all are hired. They have no permanence, but citizen is permanent. No one can force you to leave citizenship. No one. Until you deserve. You apply so because you want to leave this country or you are in jail. No one can pull back your citizenship because this is not authorized, this is not empowered, it's enshrined as such in Constitution. No advocate can understand these points, no judge can understand these points, but public can understand these points. Public has free mind to think. Judges are bound by many things, many provisions. Similarly, advocates being court officers, they are also bound by something. But public is not bound. Public is bound to abide this Constitution. So we are abiding by this Constitution. We are trying to know what is Constitution. We are trying to know what are preambles. We are trying to know what various provisions in the Constitution. And that's what I'm saying. We have started understanding thoroughly this Constitution. That is greatness of being citizen. You have to be permanent activist of Constitution. Permanent activist. Number one activist of this country is citizen. Pro-constitutional. Forget about everything else. If you understand Constitution, you understand yourself. And that is what these robbing leaders do not like. But they cannot stop you as well. We were stopped not by political leaders, we were stopped by ourselves. That was our problem. Your parent didn't know, my parent didn't know what it was. So nobody guided me and you. And those who knew also, they did not guide kids to at least know what it is. There is no one to explain to you what is written and what's the meaning of that. No one is there. You think as simple man, simple woman,
or girl or boy, that this is that meaning. And if you're clear that is meaning means that is meaning. Simple. What code does? When it's some difficult word, code doesn't take meaning its own by its own. It refers to dictionary or certain conventional definition. Then it decides based on conventional definition or dictionary meaning and interprets what's there. So you are also dictionary. You know English, you know Hindi, you know other language. You read it and interpret that. If you interpret that your way, you can easily understand that. And that is called self-study. Swayam Adhyan. Swayam Adhyan. Don't you have this capability that you can self-study? Do you need a teacher for everything? Did teacher teach you how you eat? Did teacher teach you what is sun? This teacher taught you how to walk? No. You got it through system, through your parent and through nature. That is what is required. Consider that constitution is nature. To some extent it is true also that constitution is nature. इस बात को मान लीजिए, मेरा संविधान मेरा है, बस my constitution is mine. You think that and read your portion, forget all other portion, you will understand this constitution. So simple. In philosophical way, in imaginary way, I am saying, don't worry about everything in that. Same thing I'm telling you, all those who are protesting, that try to find solution. Don't worry about CA, don't worry about NRC. These are meaningless. This is only drama by government to divert attention of people from existing fire problems, volcanic problems. Economy has been burst. It's a volcano. All magma has come out, lava has come out, and it's nowhere. Complete smoke and fire. And they are making a budget. They're saying budget. What budget? Do you have money? What's budget then? What happened to last budget? And what happened to last budget? Is there some information? No information. Just stupid arrangements, nothing else. Somebody was asking me this and in this budget, do you see this? Oh, why see in budget there's no money? Forget budget. If you have no job, what meaning of income tax? If you have no job, is there some meaning of income tax? Tell me. No meaning. If there is no sale, no market, where's money? Where's GST going? Nothing. अरे हम है नहीं, अर्थशास्त्र है नहीं, कुछ हम कर नहीं रहे, शोर मचा रहे हैं. कोई कह रहा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. इससे ज्यादा वो कर नहीं सकते. कुछ कर नहीं रहे आप, इकोनॉमी अपने आप हो जाएगी, 100 में हो जाएगी. जैसे आपने कहा 2 करोड़ मकान बना दिए हमने. हाँ जी, आपने बना दिया, मानते हैं, जुपिटर पे जाएंगे हम देखने. और क्या करेंगे? यही होता है ना आंसर. जब कोई झूठ बोले आपसे और आप जानते हैं वो झूठ बोल रहा है, तो क्या करेंगे आप? और वो भी एक ऐसे पोस्ट पे बैठा हुआ जिससे ऊपर पोस्ट ही नहीं है. अगर वहां से आपको झूठ आए तो क्या कहेंगे आप? जिंदगी का एक मजाक, आपके साथ खिलवाड़, और क्या कहेंगे? यही हो रहा है, यही हो रहा है. और पागल बनी जनता. हम सब पागल बना दिए गए. हम पागल बनाए जा रहे हैं और हम बन रहे हैं और बनते रहेंगे अगर नहीं समझेंगे तो आज भी. और बार बार मैं यही कहना चाहता हूं, थोड़ा दिमाग से सोचो. हर वक्त पैसे की भी मत सोचो. पैसे की भी सोचना ज्यादा ठीक नहीं होता, क्योंकि पैसा भी दिमाग खराब करता है आदमी का. पैसा वो बीमारी है जो बॉम्ब से भी ज्यादा बीमारी है. वो आपकी जेब में हिलता रहता है. अरे ये पैसा है, ये पैसा है, क्या करूं मैं इसका? और सोते सोते जागते जागते आप यही सोते रहते.
जब आप समझ जाएंगे कि देश किस तरफ जा रहा है और किस तरफ ले जाना है इसको, तो पैसा भी आपका सही जगह लग जाएगा। आज हमें जो नहीं पता, वो ये नहीं पता कि हमारी मंजिल कहाँ है। हमारी मंजिल हमें नहीं पता। हम सिर्फ वही जानते हैं जो हम कर रहे हैं। हम जिस फील्ड में चले जाते हैं, जहां भी, हम उससे ज्यादा जानना भी नहीं चाहते, और यही हमारी कमी है। यही कमी है हमारी। हमारी कमी इसलिए कि हम एक बहुत बड़ा देश है, हम छोटा देश नहीं है। और जब बड़ा देश होता है तो बड़ी प्रॉब्लम भी होती है, बड़ी पावर जनता भी होती है। छोटे देश में शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कोई देश देख लीजिए, गल्फ का देख लीजिए, यूएई है, सऊदीया है, बहरीन है, मस्कट है, ओमान है, कतार है, और जो भी है, मिडिल ईस्ट के देश देख लीजिए, इराक है, ईरान है, दूसरे हैं, उनको देख लीजिए आप। अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में लीबिया है, लेबनान है। ये छोटे छोटे देश हैं। छोटे देश का मतलब इनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो उन्हें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं आएगी ऐसी प्रॉब्लम। वो अपने लोगों को मकान भी दे सकते हैं, जॉब भी दे सकते हैं, पढ़ाई के लिए पैसा भी दे सकते हैं, और वो देते रहे हैं। इराक में मकान के लिए भी पैसा मिलता था सदाम के टाइम में, पढ़ाई के लिए मिलता था। गद्दाफी भी देता था मकान के लिए, पढ़ाई के लिए, और बहुत जगह मिलता था। सऊदी में भी काफी कुछ मिलता है। सवाल उनका नहीं है, सवाल हमारे देश का है। वो तो रह लेंगे, कर लेंगे। इंग्लैंड में भी डोल अलाउंस मिलता है, अमेरिका में भी मिलता है, कम से कम खा तो लेंगे आप। वो हमारे देश में नहीं है। झूठे वादे जरूर मिलते हैं। हमें वो चीज सोचनी है कि हम कैसे हमारी पब्लिक को खाना दें। 140 करोड़ लोग, कई देशों को भी मिला देंगे तो नहीं बनेंगे। 55 करोड़ लोग यूरोप में हैं, 50 करोड़ लोग, 20-25 करोड़ लोग अमेरिका में हैं, और इंग्लैंड के भी आप मिला दे तो इतने नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? हम एक अलग देश है। हमको गुमराह करेंगे कोई, हम गुमराह होंगे तो हम मरेंगे, और वही होता है, हम गुमराह होते हैं। जिस देश के पढ़े लिखे इतने हो कि अमेरिका की पॉपुलेशन भी इतना हो, और उस देश के अगर ये हाल हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम उन लोगों को यूज नहीं कर पा रहे, अपने देश के विकास में नहीं लगा पा रहे, इसलिए वो गुमराह हो गए। It's not their fault. We have population, immense population. If you sum up population of Europe, America, England, you will not find that numbers that we have. And therefore we have same problems. Those countries who are small countries, many countries in the Middle East and in Gulf, you take Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and UAE, and all those, they are able to afford problems to solve for their people. They are able to give houses and education free. That's same thing used to happen in Saddam Hussein time. It used to happen in Libya in Gaddafi time, and many other countries have used to do that, so they can solve their problem. Your population is limited. America is giving dole allowance, and UK gives dole. Your population is limited. But we cannot do that because we are big population. We are, you can say, 1/4 of your no. We are not small that. So we are different. So we have to manage differently. We have education. We have technical capability. We have health capability. We have human potential. We have natural resources. We have professional minds. What do you want? What actually do you want? We have everything. With as many countries lack. We have people, technical people, those who don't are very academically qualified, but they have arrangement knowledge. They know how to do something which cannot be done otherwise, but they are abused. This capability is not valued properly. We have skills without quality. We have too much skills, but quality is lapsing. So that quality is required to be inducted to them, but that's not done. We have good engineers, but they are lapsing understanding of system. They are lapsing quality and safety, so they are not giving proper results. And same thing applies to medicals. What we say, we have everything, but we are misled.
So who can lead us? We want those people from public. We want from public, not from political groups. Those potent people, those important people, if they come to government, if they come to legislature, they can change scene of this country. What I have to say, we need technocrats, we need professionals, we need ordinary people into our governments, legislative government, executive government, and judicial government. In judiciary, we have people. They are qualified, they are judges, but backgrounds also we need. We want people from that background who know real problems. That is must. We don't want judiciary only to confine to acts, to provisions. We need those type of judges which know what happens on ground. Because after all, ground reality is a must. So-called circumstances evidence, that's a must. Circumstances, what they say, that must be included. For that, we need that class of people. We don't need just sitting in court and deciding everything based on papers. No. There is investigation, judge has power in America. They do it. But we are having passive judiciary. That is why it takes 30 years, 40 years, 20 years for total jurisdiction and for total judgment in certain cases. So we are indirectly distant, we are located far off our judiciary. Every person is hesitant to go to claim their cases because people hesitate courts. For someone, Supreme Court is very big, top temple, and they cannot enter in Supreme Court. When people have hesitation in judiciary, how can your problem be solved? Legislature is tougher. They cannot understand. They talk on their political lines. They don't talk on public lines. Legislature must be for public, but they are not for public. They are for political groups. Unfortunately, we have 550 MPs in one house, 250 MPs in other house, but we are not getting benefit of their knowledge, benefit of their potential, because they don't have knowledge, they don't have potential. Yes, few people are there, few MPs are there, old MPs who know only law. Realities they don't know too. They don't know realities, they don't know ground facts. They only know law. And only knowledge of law is not adequate for public. Understanding and application law is important. But that's not happening. They just speak for sake of speech and no value. So we have to redefine what is our legislature. And there are so many things we can do, but we are not thinking about that. My answer is, first of all, let us say, I have repeated many times, again I am repeating that. Election. We are very happy in this election. Every election we are very happy, but we never understand what is election. We never understand. Do you understand? You think there is contest between many people? First person is this who got highest vote, second person this, and first person declared victorious, right? He is elected. Yes, person is elected. How many percent people elect him? Is that not a question? If in certain area, let us say 70% people vote, all right, 70 people, we accept that, okay, 70 people is more than majority, fine. But out of that 70, how many percent this first get, how many percent second get, and third get? If let us say first one gets 51%, second one gets 49%, or you can change that, first one gets 40, and they get 38, third person gets something remaining. But election is only for one. Leading candidate is elected. My question is, that leading candidate, whosoever is, can he alone represent constituency? You mean what question is asking for? I'm not asking for. I'm just trying to explain to you
Where is population represented? Where is it represented? If person having 45% or 40% votes and remaining 60 are not with him, how can that person represent all? And because there are lakhs of people in each constituency, maybe 10 lakhs, 15 lakhs, if there are 15 lakh people, let us say, and only 40% enjoys, so 6 lakhs he enjoys support of. What about others? After all, this MP is also a human being. What shall be in his mind? Only these people voted to me. Why should I worry about them? Because everybody is human being. They are not having big mind because their political parties don't have big minds. So that person is actually not representative. You can say part representative. So should we not think to redefine election procedure? Should we not think of that? Should we not say, okay, this person is having 40%, other person 38%, at least let both be elected. And they should work in rotation. Okay, half period you or half period you, finish. Returning officers should sign that you are for 2.5 years and you are for 3 years, you are for 2 years. Is that not possible? Should we not devise a system like that? That at least maximum people must be represented. Why should other one who got just 1 vote less be rejected? And 1 vote more, he is accepted. So this is big question mark. Shall we not think about this? Should we not think? After all, this is democracy. Democracy doesn't mean that only one should be there. And if suppose, let us accept this one day, and you get 100 candidates like this, and 100 second one, 100 are first one, and 100 are second one. So you are declaring more people. This means this have to be replaced. And this is one party, this is another party. This means when this candidate goes, this elected candidate goes, other one comes. And maybe this is not from party who won. So position of PM shall be affected. Okay, that's what I want. That is what I want. Position of PM should be affected. If position is affected, PM shall think accordingly. Oh, my job is also not safe. What's wrong with that? Tell me. Should we not differentiate that way? Should we redefine the system? All right, this is one part. Another part. One constituency 5 lakhs voters. One has 20 lakhs voters. One has 25 lakhs voters. But MP is one. Where is the representation? Why are we confining to 550 only? Why only 550? Why don't we increase it to 2,000? What's wrong with that? If my area MP doesn't know who I am, he never saw me, that person is representing me. We should have as less possible voters in one. Under one. At least he can talk to people. What happens, you see, if 15 lakh voters are there in one constituency, that person has also 1 vote in Lok Sabha, in any debate or in any bill when vote is cast. And if suppose has 50,000 only, 1 lakh, that's also has 1 vote. Vote is not duly proportional. So why not to change quantity of vote during parliament debates and increase accordingly for people who have higher volume or higher population? Let somebody has 2 votes, somebody has 3 votes, somebody has 1 vote. And accordingly, let me calculate who voted for or voted against, and you see what's higher or there. It's also not happening. And also, if I say you are debating in Lok Sabha or Rajya Sabha, your debate is there, it's being recorded, and it's being answered, it's being recorded. But it's not being considered. Because it's fact that government people never accepts what opposition people states. This is fact. Means whatever they record is only for purpose of records, for journals and nothing else. You can refer that in future if so required.
because court cannot go into that detail. Proceedings of legislature do not fall under jurisdiction of courts. This is very defined law, settled law. So question arises, what is value of these debates? Should you not think that way? If these debates are not considered during approval procedure, they are not duly weighed, what is purpose of these debates? Why should we waste time on those? And if we consider them, there should be strict provision that weightage must be given to that. Whatever that opposition guy speaks and whatever that government guy speaks, there must be weightage. And that weightage may be, okay, he talked this, let us accept 50% of that, or let us give so many points, or there should be committee inside that house just to screen out this and transfer this weightage to speaker to decide. Just not raising hands, it's not enough. Eyes. That's not enough. We have to be scientific. We have to think scientifically. I mean, how best can we use our parliament on which we are spending billions of rupees every 5 years? Our money is going waste, we don't care. They're enjoying life, we don't care. You don't find them in houses, you don't care. That's what I'm saying. They are aliens to public. Our MPs, our parliamentarians are aliens to public. Should we not think on that? आखिर किस लिए रखा है उनको? हमने उनको क्यों चुना? सिर्फ इसलिए कि हमको चुनना है? इसलिए सिर्फ इसलिए कि संविधान में लिखा है इनको चुनिए? संविधान में तो सही लिखा है. संविधान में ये तो नहीं लिखा कि देखिए मत उसको. संविधान में ये तो नहीं लिखा कि छानने मत उसको. संविधान में ये तो नहीं लिखा कि आपको बार उसके बारे में कुछ पूछना. संविधान में ये तो नहीं लिखा कि आप प्राइम मिनिस्टर को चुनिए. संविधान में ये तो नहीं लिखा कि किसी को भी आंख मीच के वोट दे दीजिए. फिर हम क्यों करते हैं ऐसा? हमने वोट को एक मजाक बना दिया. एक ऐसा मजाक जो एक फिल्म है अपने आप में, एक जोक है अपने आप में. टमाटर गाजर है जो अपने आप में, जिसका कोई मतलब नहीं. वोट को एक बच्चे का खिलौना बना दिया. जैसे बच्चा खिलौने से खेलता है, आप भी खिलौने से खेलिए. बस उनके लिए ये खिलौना नहीं है जो ये मांग रहे हैं. उन्होंने आपके लिए खिलौना बना दिया. खिलौना होगा तो बच्चे से तो मांग लेंगे, ऐसा कह देंगे यार इसके बदले में दूसरा खिलौना ले लेना, ये खिलौना मुझे दे दे मेरे राजा. वोटर तो राजा है, उस टाइम वो राजा है. उस टाइम वो बूढ़े के पैर भी छू लेगा, आपके सामने झुक भी जाएगा, सब कुछ कर लेगा वो उस वोट के लिए. वोट जो उसकी इंडस्ट्री से ज्यादा महंगा करता है. किसी को 500 रुपए में देके खरीद लेगा, किसी को शराब की बोतल देके खरीद लेगा, किसी को कंबल बांट के खरीद लेगा, और किसी को 15 लाख रुपए देके ले लेगा, किसी को जॉब देके ले लेगा, किसी को कह देगा देखो मैंने आपको गैस का सिलेंडर दे दिया, मैंने आपको लैपटॉप दे दिया, मैंने आपको मुफ्त में पानी दे दिया, मैंने बिजली मुफ्त में दे दी, और मैं मकान बना के दूंगा, और मैंने 2 करोड़ दे भी दिए. आपने तो वोट खरीद लिया और मैंने वोट बेच दिया. अरे भाई वोट तो बेचने की चीज है, मेरे तो ख्याल ही नहीं आया, मैं तो कितने पैसे कमा लेता, 14 बार वोट दिया है. सोच में आता है शायद 14 बार में मुझे भी कुछ मिल जाता, कुछ तो मिल जाता. गलती हो गई. ये सोचने का सवाल है. अपने मुंह पे चांटा मारना चाहिए आपको, अपने मुंह पे चांटा मारना चाहिए कि आपने वोट को एक मजाक समझा, एक फन, एक गेम समझा. That's what is problem of citizens of this country, to understand what is actually vote. What does it mean? How it relates to you? How does it relate to your people, to your country, to nation, to legislature, to executive, and to judiciary? How does it relate? Is this a procedure only? Or if I vote, what's benefit to nation? And if I don't vote, what's benefit to nation? You have to consider both factors.
Vote is not exchangeable, and vote is right of citizen. And if it is a right, your franchise actually is not right alone. It is a franchise, it's adult suffrage. You don't think it's just only a right or a privilege. It is your authority of so-called kingdom. Citizens' kingdom we are. We are not president or prime minister kingdom. We are citizens' kingdom. Citizens' kingdom lies in pages of constitution. Sovereign republic minded. It's not I am saying, it's written. What is sovereign? Raja is sovereign, king is sovereign. And what is republic? Citizen is republic. You are republic means you are public. Before you were slaves of British, now you are republic. So if you are republic and you are king, who shall give you something? You are king. You have to take yourself. So take yourself seats of parliaments and seats of legislatures of assemblies. Until you take that, do not allow these rascals, these political leaders, political shopkeepers, political industrialists to loot you. That is what you have to understand now after 72 years of freedom of this nation. You are talking of freedom and they are saying you are doing a crime. Because talking of freedom is against nation, is against society. That's what these people say. They are very well educated people. They are more educated than public. That's what talking like this. These people do not even understand meaning of freedom. They are, you can say, just befooling you and just defaming people. Freedom itself written in the Constitution. Freedom of rights, freedom of expression, freedom to speech, freedom to work, freedom to travel, freedom to do wherever you want, till it is within limits, within laws. So freedom is there. You cannot say freedom is alien word or freedom is anti-national. If you say your mind is rubbish, freedom is right of everybody. Who is asking freedom for a nation? Nation is there. We are not asking freedom. We are not free. We are free, but we want to be more free. We are free. We expect to be more free. What's wrong with that? अरे हम कब कह रहे हैं देश से आजादी चाहिए? हम तो नहीं कह रहे. हमारा संविधान कहता है आप आजाद हैं बात करने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, काम करने के लिए, सोने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, हद ऊंचे से ऊंचा पद हासिल करने के लिए. हम स्वतंत्र हैं. ये संविधान कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं. फिर आप कैसे कहते हैं कि स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, देशद्रोह है? संविधान क्या देशद्रोह है? संविधान में क्या लिखा है? आप इस राष्ट्र को ऊंचे से ऊंचा लेके जाएं. लिखा है कि नहीं लिखा है 51A में, फंडामेंटल ड्यूटीज में? आपका कर्तव्य है कि आप इस देश को विज्ञान आधारित, टेक्नोलॉजी आधारित, ऊंचे से ऊंचा, दूर से दूर लेकर जाएं, ताकि सारी दुनिया हमें देखे और पूछे कि आप ये सब कैसे पाया. लिखा है संविधान में. तो ये क्या है? अगर मैं देश को आगे ले ऐसा, क्या मेरी फ्रीडम नहीं है? ये क्या मेरी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? तो आप कैसे कहते हैं कि ये देशद्रोह है? स्वतंत्रता किसी भी चीज की मांगना क्या देशद्रोह है? मैं पढ़ाई की स्वतंत्रता चाहता हूं कि मुझे मुफ्त में पढ़ाई दी जाए, मेरा पैसा नहीं है, तो उसमें क्या देशद्रोह है? मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, इसमें क्या देशद्रोह है? मुझे स्वतंत्रता चाहिए अच्छे जीने की. मुझे स्वतंत्रता चाहिए बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से आगे बढ़ने की. मुझे स्वतंत्रता चाहिए जो भी पूजा पाठ में करूं उसे करने की. इसमें क्या देशद्रोह है? देशद्रोह आपके दिमाग में. आप जनता की खुशी देख नहीं सकते, क्योंकि जनता की खुशी हो गई तो आपका दुख शुरू. दिस इज क्वेश्चन, दिस इज इक्वेशन. You are not happy to see people thinking. You want them to have mind, state their mind according to your wishes. Constitution is
giving you rights of freedom, and you are saying demanding freedom is anti-national. Only fool can say that. Only a person who doesn't have mind can say that, nothing else. You are that person in political gundagirdi. I should clearly say all. We have freedom according to Constitution provisions. And we have to take that. Not from you, from nation. We are asking nation to help every citizen. To study, to have food, to have health, and to have all common privileges and benefits that a citizen must get. That is what freedom required. Who are you to give us? You are not our responsible. You are not giving me food. You are not giving me anything. You are just taking money from me for yourself. That is what is to be thought of. And until we do not make ourselves smart enough to think this way, we cannot move forward. Impossible. You have to open your mind, your hearts, and build up capacity, build up your thinking capacity. Raise your school of thoughts. Only then you can live. Otherwise, you have to accept slavery of these people. These people never think that you should get that, but they are nothing. Till this constitution exists, they are nothing. That's what they want to scrap this constitution. Because they know constitution is a public friend and constitution is this political leader's enemy. They are enemies because they are constitutional opposers. In fact, they oppose constitution. They don't oppose people, but if constitution is opposed, people are opposed. Using name of Gandhi is no answer. You can use name of Gandhi, it has got no meaning. Because you are cheating Gandhi, you are cheating yourself, and you are cheating everybody. Your politics, your market of politics, your industry of politics depends upon how many lies you are able to speak. That is your market. And you are there in power by something, by some other reason, you are not able to surrender that power to people. And you are saying public is anti-national, our citizens are anti-national, they have a plan, they want to break this country, and this is your dirty thoughts. Your dirty thoughts, which thoughts have got no meaning, these are useless thoughts, but you have done it. That's again I'm saying, our aim should be to change existing system in its operation. System is there, it has to work, but it's working and controlled by these politicians, where public should come and control. There was a time when they promised they would do it during Andolan, but that resulted in failure because those peoples were not supporting nation. They were planning to support themselves, and they got those positions all day. All they got those positions. No one remained activist as promised. Yes, they are not activists. They were never activists. Now they are only interested in seats. All them, no less, no more. There's not even a single one out of them who still works as activist. All are having relations to some political parties. All are like that. So that was, you can say, a deceitful action, a deceitful drama, befooling public, and public was befooled. And our Congress failed in that direction that time. They could not understand these people. And those people are no more here. They are not in field, they are not in society. They all disappeared from society. And public is alone. So that's why they are moving alone. Because when there is no solution, you have to escape yourself from that turbulence. And that's what's happened. देश को बनाना तो आपके हाथ में है. कोई बनाने आएगा नहीं, कोई जादूगर तो आपको बताएगा क्या करना है. समझना आपको है, करना आपको है. अगर आप इनके भरोसे बैठे रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे.
आपके पास संविधान है, आपके पास विधान है, आपको सोचना पड़ेगा ये संविधान आखिर क्यों आया, क्या इसके बिना गुजारा चल सकता था या नहीं चल सकता था, ऐसा क्या हुआ कि हमें कहा गया ये संविधान आपको लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे जी हम आजाद हुए थे, हाँ ठीक है आप आजाद हुए थे, स्वतंत्रता मिली थी आपको, तो उससे पहले भी तो चल रहा था कुछ, उससे पहले भी कुछ चल रहा था, लेकिन आप जानते हैं वो अंग्रेजों का था। हो सकता है उसमें हमारी बातें पूरी ना हो सकें जो हम चाहते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ऐसा नहीं था। उससे पहले जो भी सरकारी कानून लागू होता था सरकार का, भारत सरकार का 1935 का, उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि हम चल ना पाए आगे। वो भी एक अच्छा था, अमेंड कर सकते थे, शायद उसी को लाए हैं। संविधान भी वही है, सच कोई जाने तो संविधान का 66% भंडार वही है जो स्वयं था, और उसमें से कुछ चेंज किया गया बाद में 1/3 का, और उसमें कई कंट्री को लाया गया, उनके संविधान पढ़े गए, और उसके बाद ये आगे बड़ी बात। और बिजली, पानी, ये सब छोटी बातें हैं। आप संविधान में समझिए, संविधान को अपने सर पर रखिए, अपने मस्तिष्क पे रखिए, और कम से कम दिन में कुछ वर्ड्स याद कर लीजिए उनका यूज करने के लिए, वही अच्छा रहेगा। मैं बहुत संविधान की बात करता हूं, आप सोचते होंगे कि क्यों इतना बोलता है, 3-3 घंटे खराब करता है। आपके 3 घंटे खराब होते होंगे, हो सकता है, लेकिन आपके कितने घंटे बचेंगे आप जानते नहीं, आपको कितना बेनिफिट होगा इससे आप जानते नहीं। शायद जान जाएंगे तो ऐसी बात नहीं कहेंगे। आपने संविधान पढ़ा नहीं इसलिए आपका नुकसान ज्यादा हुआ है। अगर समझ जाते, पढ़ लेते तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने सही तरह से इन वोट मांगने वालों को हैंडल किया होता तो ऐसा नहीं होता। कोई तो सिर्फ इतना करता है, या कभी पास में आता है तो हाथ मिला लेता है, हो गया काम, वोट दे दो, ऐसा ही होता है। हाँ, कोई आपके पास आ भी सकता है, आपको जान पहचान का हो या आपको जानता हो। पहले तो लोग जाते थे, मैंने देखा था, घरों में जाते थे सबके वोट मांगने, चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन अब ऐसा दिख नहीं रहा। वही तो आपने देखना है, और आपने देखना क्या है, ये बात आपको अब देखनी है और उनको दिखानी है। यही आपकी मंजिल है। ये सीए पीए फटाफट हो जाएगा, भूल जाए इसको। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, आप वोट देके भाग जाते हैं, और रिजल्ट से ताली बजाते हैं, कोई खुश होता है कोई बोलता है ये जीत गया, या बात खत्म, अगले दिन से सब पुराना हो गया। आपको क्या मिला, मेरा प्रश्न वही आ जाता है, आपको क्या मिला? क्या सरकार आपकी बनी? क्या मेंबर आपका बना? अगर आपका मेंबर वो है तो वो आपके पास आता क्यों नहीं? आज जितने मेंबर बैठे हैं पार्लियामेंट में, क्या वो पब्लिक से पूछने जा रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपने क्यों ये प्रोटेस्ट किया हुआ है? कितने एमपी गए? बुलाने से भी नहीं आते, जो मुझे पता लगा है। अगर जहां हजारों लोग बैठे हों और एमपी को कहा जाए भाई आके बात करिए हमसे, पहली बात तो उसे खुद आना चाहिए, उसका फर्ज है। अगर देश की जनता उसकी डिमांड कर रही है, कुछ बात करना चाहती है, नहीं भी करना चाहती है, और उसको पता लगता है कि उसके एरिया में ऐसा हो रहा है, उसका क्या फर्ज नहीं है, उसकी ड्यूटी नहीं है आके पब्लिक से बात करना? अगर ये फर्ज नहीं है तो किस बात का प्रतिनिधि है आपका वो? फिर आपका वो प्रतिनिधि नहीं है। तो वो आपका प्रतिनिधि क्यों आएगा आपके पास? वो आपके पास नहीं आएगा, आप उसे बुलाएंगे नहीं, और आप जाएंगे नहीं, उससे मिलेंगे नहीं। तो मुझे ये बताइए उसका काम क्या है? क्यों रखा आपने उसको? Why do you employ that person due by elections?
You are using election to employ that person. What's meaning of election? You're spending money and that person is working for you. What does it mean? Can't you think that way? Well, I think you should think. This is your job. Of course, I am happy that people are on the road, they are protesting, but direction must be given to them. There's no political leader is good. At least septic tank is not with them. Political leaders are septic containment, septic tank. At least they are far from that. And that is the reason the government wants to break this CAA protest. That's the only reason. Either they are sending in posters to those meetings in form of cladding of burqa, or they are doing something else. They are sending some journalists, some TV anchors to disturb that. That is not good, but they are doing that. मैं जो कहना चाहता हूं वही बार बार कहूंगा, आप सुने या ना सुने, आपको खाट खड़ी करनी है। अब हिंदी में बोल रहा हूं, खाट खड़ी करना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। खाट खड़ी करने का मतलब क्या है? उसको सोने मत दो, उसको बैठने मत दो, उसके नाक में दम करो। जो आपके पैसे पे ऐश कर रहा है उसकी नाक में दम करना चाहिए, उसको काम पे काम देना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। वो तो पार्लियामेंट में जाके समझता है मैं ही हो गया, मुझे कुछ लेना देना नहीं है मेरे लोगों से, मुझे क्या करना है, बाहर में जाओ, तुम मरते रहो, बैठे रहो सड़क पे, रोते रहो, खाते रहो, मुझे क्या लेना देना है, भीख मांगो, कुछ भी करो, आपके बच्चे ठंड में बैठे मरे मरे, मैं तो सलामत हूं, मैं सांसद हूं, मेरा तो मीटर चल रहा है, मुझे क्या करना है आपसे। आपको आऊंगा, आपने मेरी पिटाई कर दी तो, आपने मेरे साथ ये कर दिया तो, और मुझसे प्रधानमंत्री गुस्सा हो गया तो, मुझसे मेरा नेता गुस्सा हो गया तो, उसके मन में तो यही भ्रांति है कि मैं आपके वोट से बना नहीं, मुझे आपने वोट दिया नहीं, आपने वोट तो उसको दिया था, उसके नाम पर मैं बन गया, मैंने अपने नाम से वोट नहीं मांगा था। ये बात उसके माइंड में है और ये बात बैठाई आपने है। आपके वोट से नहीं बना वो, क्योंकि आपने वोट नहीं दिया उसको। वो तो बाई चांस नाम लिखा था उसका, उसने लिखवाया था जिसको आपने वोट दिया, तो उसमें इसका बेचारे का क्या कसूर है? ये बात ठीक है, आई एग्री विद दैट, बिकॉज ही डिड नॉट डिमांड एनी वोट फ्रॉम यू, somebody else demanded vote from you, so go do that. It is your problem, your problem. आपने अपने उम्मीदवार को देखा परखा नहीं, उसको जाना नहीं, क्या जरूरत जानने की? आपको सिखाया नहीं गया, सही बात है, आपको जानने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप परेशान हो रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, बुरा भी कह रहे हैं उसको, ऐसा है वैसा है, किस पार्टी का, कुछ नहीं किया, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे गलती आपकी है, गलती आपकी है, किसी और की नहीं। उस गलती को सुधारो। पर आप कहेंगे अभी तो 5 साल बैठना है, 4 साल बैठना है, तो आप रिक्वेस्ट करके जल्दी अपनी स्पीच करा सकते हैं वहां। मैंने रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, फिर भी सोचना तो है। अगर हम 20-25% लोग भी सोच पाए तो भी बहुत है कि हमको वोट कैसे देना चाहिए। किसी की शक्ल देख के देना चाहिए या किसी की प्रोफाइल देख के देना चाहिए या कोई पैसे वैसे खिला दे तो देना चाहिए। इन सब में से मैं किसी भी चीज के साथ नहीं हूं। आपको अपना कार्ड बनवाना है वोट का, बनवाइए, अच्छी तरह बनवाइए, वोट दीजिए भी, लेकिन आंख बंद करके मत दीजिए। आंख देखकर खोलकर, अगर कोई आपसे वोट मांगने आता है, पहले तो आने वाला कोई नहीं, इसलिए वोट दीजिए नहीं, और आता है तो पूछिए।
हमारे संविधान में ये नहीं लिखा है कि कौन कितना पढ़ा लिखा होगा, जो इलेक्शन कर रहा है, लड़ रहा है, वो उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ये नहीं लिखा है। लेकिन ये भी नहीं लिखा है कि आप पूछ नहीं सकते उससे, आप मांग नहीं सकते उससे, ऐसा भी नहीं लिखा है। दोनों चीजें लिखी हैं। जब दोनों चीजें लिखी हैं उसमें, तो आप अपनी ऑप्शन क्यों नहीं लेते? आप अपना अधिकार क्यों नहीं मांगते उससे? भाई बताइए आप क्या हैं, आप अपना पेपर दीजिए कि आप क्या है, सीवी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है भाई, सीवी लिख के बताइए, हम अपने आप फैसला कर लेंगे आपको देना है कि नहीं देना है। उसमें होना चाहिए उसका नाम, उसका काम, उसका धंधा, उसका पता, प्रोफेशन, क्या पहले जिंदगी में उसने किया, किधर किधर वो गया, वो आज क्या है, किसका मेंबर है। क्या ये चीज नहीं होनी चाहिए उसके साथ? होनी चाहिए, और ये देने भी चाहिए उस एरिया में। ये देखो जी, इस एरिया से ये खड़ा हुआ है, उसे वोट दे देना, लेकिन वोट देने से पहले उनसे बात भी होनी चाहिए थी। नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और यही है जड़, यही है जड़। आप इस जड़ को खत्म कर देने की सोचो, शहीन बाग की जरूरत नहीं रहेगी। जब ये पता लगेगा भारत के इन बदमाशों को कि जनता का दिमाग चेंज हो गया है, जनता अब वो जनता नहीं रही जो 2019 तक थी, 2020 में जनता का दिमाग बदला गया है। खुद आएंगे आपसे बात करने और कहेंगे मेरी माताओं बहनों, हमसे गलती हो गई, हमें समझ नहीं आया था आप क्या चाहते हैं। आप जो कहेंगे वही होगा। आप कहते हैं हम इसको बदल दें, ठीक है हम बदल देंगे, थोड़ा समय दीजिए। हम सीए को हटा देंगे या इसमें सुधार कर देंगे। हम एनआरसी की बात ही नहीं करते, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप आराम से रहिए इस देश में। क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बोलता नहीं आपके बारे में। इसका कसूर आपका कसूर। It is you only responsible for your debacles. It's not political leader, because they are businessmen. They are industrialists. They are earning on this way, in this fact. So why can you call them responsible? You cannot call them responsible. They are responsible in seed, but not for you. Not for you. I don't know who are you. I don't know. Oh, he's talking against me. Anti-national, anti-national, anti-national. Why you are talking against me? I am this country. I am honor of this country. You are not honor. You are saying I am bad. Okay, I am saying you are international. Right or wrong? इसलिए मैं कह रहा हूं, जागो, जागो देशवासियों, जागो। सड़क पे बैठो चाहे ना बैठो, जागो। Rise, rise, for time is passing. Rise, for time is going. You are leaving time. It does not come back. Time does not come back. Time does not come back. You are wasting your time. Time does not come back. You should create an environment where these political leaders must weep. They must sit by the presence of you. When you call them, they come to you. Okay, my sir, what do you say, sir? You are telling me you call them, they don't come. How it can happen if you call them, they don't come? Strange position, really strange position. You are honor of there, you're calling that boy, doesn't come this MP, kick that MP. Simple. He is not God, he is my representative. If he doesn't listen to me, come on, speak here in public. You should have that guts. Take him from home. Take police with you. I want this MP here. His father shall come. I want this MP in public. We want to talk to him. Police has to support you. It's not prerogative of that MP because he's public servant. He cannot say no. Yes, he may listen to you or not, but he has to come to talk to you.
You did not do that. You didn't do that. If you have to change society, if you have to change polluted system, you have to apply injection. You have to apply injection. But you don't have injection. That's the problem. Where is your injection? Your injection is here. Kick me here. I say kick me here also. Is that injection? You are educated now. You should know how to protect yourself. You should know how to take self-defense. I'm not saying offend others, but self-defense is your responsibility. I'm not saying submit to someone. Don't submit, take self-defense. Why you submit? Gandhi time was different. You are dealing with people. Now you are not dealing with people. That's the difference. If you have to deal with monkeys or with donkeys or with dogs or with similar kind of people, you think they accept you? They accept you only as community, nothing else. They are abusing you. They are doing every kind of atrocity on you, and you accept all atrocities one by one, and your reporters, your television channels are cheating you. They keep on cheating you continuously. Every time I saw them, tell me something CA, this kangaroo asks, what is CA? Tell me, explain to me CA. Every day CA, 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 and before 370, 370, 370. They have a disease. Prolong every day, talk every day, same thing, same thing, same thing, same thing, and same thing. Don't ask economics, don't ask police order, don't ask something else. Economics, economics, economics. No, 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 no. CA, CA, explain CA. If you don't know why you're sitting here, are these mass communication people? Think so? Why you say, why you are sitting here? There is no, they will decide you have to protest or no. You see, these anchors, these channels have become so big that they are going to decide what you are doing is right or wrong. They are so big. They will decide about your actions. Such people deserve such treatment. You know what treatment? If I am there and that journalist asks me, I'll come here and come. Simple. What you're talking? Who are you to talk to me? Out. Out. That should be called retaliation. You're abusing me. If I am doing demonstration, this is my right. Why are you asking me why I'm doing this? Why are you coming here to talk to me? Who are you? Am I your servant? You just relay news that this is happening and that's all. You have no ask. Don't ask me why I'm doing this. I am not supposed to reply. If I reply, it's up to me if I respond to your question or no. You go and ask that person who decided this. Ask MPs. There are 800 MPs in this country. Go and ask them on what basis they approved this. Why are you asking me? What sort of journalist you are? What sort of reporter you are? Are you stupid? All are stupid. Bring all 800 MPs and talk to them. On what basis they decide? Do they know what they have done? If they don't know, why you ask me? I am an ordinary citizen. They are parliamentarians. You ask them. Do you have courage to ask them? Simply one thing, we are not taking citizenship. We are not taking, this is a bloody answer, owl answer, dog's answer. You cannot take citizenship back in the right at all. This is Bharat. Nowhere in a written constitution you can take it back, citizenship. Read articles and understand the fast. You don't know which articles are they? You're just to be fooling people. You're wasting people's time because you are paid. Do your job honestly. If you want respect from people, or you are no value to us, get lost. Do you have courage?
call all MPs to one place and you ask them, ask Prime Minister, ask ministers, explain how you have done, ask opposition how you have done. You have courage, or only you can just fight with common man? You are not allowing me talk. You are not. No, we don't want to talk to dogs. You are dogs because you are bo only. You do not. You are not educated class. You don't know how to handle people. I am small man. I am public. I am sitting on road. What's your problem? What's your problem? This is a national problem. If I am suffering, you have to suffer. Everybody has to suffer. This is a constitutional matter. This is not CA alone. This is a matter of my constitution of this country. It's not your father's constitution. It is Bharat constitution. Do you understand that? It's my duty to understand and protect it. You want no one to stop me from this. Okay, if you call me traitor, I am traitor. Finish. If you call me anti-national, I am anti-national. Yes. You will shoot me? What do you think? Illiterate guys. Do not do tangent square. Do not sign tota. You are coming to question me. Highly educated people are talking against this. Professors are talking. Engineers are talking. Doctors are talking. Many more educated people are all the fools. You are only literate. We have to express like this our opinions. You have to use such energy to talk to these people because you have studio, you have backup, you have big cameras, you have big people. You're paying them and calling them to come on, sit and talk against this, talk say for this. You're buying citizens, you're buying students, you're buying all them, and you're showing public show. People are safe, supporting, people are supporting. What does it mean? If there's a law, what is the meaning of people are supporting? Value only those who oppose it. There is no value of support when there is law. Oh, see, they are supporting CA, they are supporting CA. What support? Already is law. Meaning is they are opposing it. Those who oppose, they have a value. You have to think that way. Rather than arguing with them, you tell what's right, what's wrong. If you can explain to them, and then also receive questions. But you say, no, tell me, what's the result? You illiterate, go to school and university, or come to me, I will teach you. You stupid guys, just spreading nonsense, dissemination of information, misinformation. You think public is fool? You think I am fool? I know Constitution more than what you know. And I can teach you very well. You don't understand, this is your problem. Don't underestimate people. And don't think if they are women, they are illiterate. No. They are more understood, they are more educated than what you are. But they have no platform to talk. So they created a platform by this opposing, by this protest dharna. You have a television channel, they have a road channel. Road, street channel, dharna. They are sitting to express their opinion. They have every right to do that. Your government can send them police, no problem, send them. How long can you send them? You can send them to jail. Okay, send them to jail. But what is your value? You are just using, you are abusing official power. You are abusing police, which is required to secure them. They are supporting government. What sort of people are you? What's your mind? What's your status? What's value? That must be correlated. अपने आप को बादशाह समझने लगते हो तुम, चैनल डालो, 2 पैसे की औकात नहीं है तुम्हारी। अगर चैनल छोड़ दोगे तो कोई जॉब भी नहीं देगा आपको, क्योंकि ना आप पढ़ना जानते हो ना लिखना जानते हो, आप चिल्लाना जानते हो, सिर्फ चिल्लाना। आप समझते हो आप बहुत पढ़े लिखे हो, पब्लिक बहुत खुश होती है आपसे, तो भूल जाओ, कोई खुश नहीं होगा आपसे। आपका मजाक उड़ाया जाता है, खूब उड़ाया जाता है। मैं उड़ा रहा हूं मजाक आपका। चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे, क्या होता है चिल्लाना? आराम से बात करो, समझा के बात करो। हो सकता है हम भी गलत हो सकते हैं, आप बताइए ना हमारी गलती क्या है।
हमारी बात का जवाब भी तो दीजिए। आप कहते हैं नहीं हम पूछेंगे, आप बताइए। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दुनिया में कि हम पूछेंगे। एग्जामिनेशन नहीं है वो, आप एग्जामिनेशन नहीं लेने आए हमारा, आप बात करने आए हैं, इंटरेक्शन करने आए हैं। इंटरव्यू का मतलब इंटरेक्शन होता है, इंटरव्यू। आपका व्यू और मेरा व्यू दोनों का इंटर कनेक्शन, इसका मतलब इंटरव्यू होता है। हम कभी इंटरव्यू देने जाते हैं, हम पूछ लेते हैं उनसे क्या होगा इसमें। इंटरव्यू देने आए तो हमें आपका भी पता होना चाहिए ना, क्या गलत है उसमें। इंटरव्यू को गुलामी तो नहीं कर रहे हैं हम आपकी इंटरव्यू देके। आप कहते हैं हमसे हम पूछेंगे सवाल, नहीं कोई ऐसा नहीं है। होंगे आपकी एजुकेशन में, ऐसा हम नहीं मानते। जब इंटर शब्द आ गया तो दोनों का अधिकार बनता है। आप या तो व्यू के, हम आपका व्यू लेने आए हैं, नहीं आप इंटरव्यू कह रहे हैं। इंटरव्यू नहीं ऐसा होता। फिर हम भी पूछेंगे आपसे, आपको भी जवाब देना होगा। हम जानते हैं आप गलत है तो हम कहेंगे आप गलत है, इसमें क्या गलत है। आप चिल्लाएं हम सुनते जाएं, क्यों भाई, गुलाम है आपके। ठीक है, टेलीविजन चैनल पे आप पैसे देते होंगे लोगों को चिल्लाने के लिए, चिल्लाए सुने, वो सुन लेंगे, मैं नहीं सुनूंगा, मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। इसलिए प्रोफेशनल बनिए, डकैत नहीं, इंसान बनिए, जानवर नहीं। अभी तक आप जानवर हैं, अभी तक आप में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप जानते नहीं कि लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए। बस आप जानते हैं इसके अंदर बोलने की कैपेसिटी नहीं है, हर एक के अंदर नहीं होती। 95% लोगों में बोलने की कैपेसिटी नहीं हो सकती, जरूरी नहीं सब में हो। तो इसका मतलब दबा देंगे इनको आप। हर आदमी के अंदर होता है भाई इसका क्या जवाब देना है, लेकिन वो जवाब दे नहीं पाता क्योंकि वो वर्ड्स में एक्सप्रेशन नहीं आते उसके अंदर। तो क्या हो गया, आप कुछ भी बोल देंगे। आप कहते हैं अच्छा ये मतलब है ना, ये मतलब है ना, ये मतलब है ना। अरे 2-3 बार सुन के वैसे ही घबरा जाएगा भाई। हाँ 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 ये मतलब है, क्या करेगा वो। बड़े बड़े नेता कहते थे नो कमेंट्स, वो जानते हैं कि आप बेवकूफ हैं इसलिए कमेंट्स देना ही नहीं, सुझाव नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। पता उन लोगों से कौन बात करेगा। इस देश का सुधार तभी होगा आप जैसे जर्नलिस्ट जब नहीं हो। एक जमाना था कि जर्नलिस्ट की वैल्यू होती थी, जिस तरह प्रधानमंत्री की वैल्यू होती थी। प्रधानमंत्री के एक एक शब्द को समझा जाता था, इसने ऐसा क्यों कहा, इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों कहा, उसका क्या मतलब हो सकता है। कोई डिक्शनरी खोलता था, नहीं समझ आता था तो अच्छा ये मतलब भी हो सकता है, इसका ये मतलब भी हो सकता है। अरे निक्सन ने ये कहा था, उसका ये मतलब था, तो उसी के जवाब में तो उसने ये नहीं कहा। कितनी रिसर्च होती थी उसके ऊपर। और आज कच्छे में बोल दो, मोदी कुछ भी बोल देगा, कुछ भी, राहुल कुछ भी बोल देगा, कोई पूछने वाला नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सब हिंदुस्तान 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 की रट लगाए रहते हो सारा दिन। आप क्या, मोदी क्या, राहुल क्या, कपिल क्या, कौन क्या, सबको देख लो। अब मेरा प्रश्न है आपसे, क्या यह देशद्रोह नहीं है। जो आपके देश का नाम नहीं है आप क्यों ले रही हैं। This is also international statement. If you're calling this country Hindustan, show me in constitution where is Hindustan. I am asking every citizen of this country and all people in this country, show me where is Hindustan. I start speaking same. Is that wrong question? Show me where it is. All channels Hindustani, 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 Hindustani. Stupid guys, illiterate guys. You cannot name yourself. You don't have time even to read one article. Number one article you cannot read. And you are claiming something big. This is nonsense of not watch this. आपकी बुद्धि में बात नहीं आती, बस शोर मचाना है, जानवरों की तरह चिल्लाना है, दबाना है दूसरे को बात करते हुए। चिल्ला चिल्ला के टीवी में बोलते हैं कुछ लोग, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, सर आप ये बताइए, सर आप ये बताइए, सर क्या बताइए सर। आपके बाप के नौकर हैं हम, जो आप कहेंगे वो बोल देंगे। हमारी बात का भी जवाब दीजिए आप। हम गुलाम नहीं है आपके प्रश्न का आंसर देने के लिए। आप शोर क्यों मचा रहे हैं, पहले इसका जवाब दे दीजिए। आप चिल्ला क्यों रहे हैं, पहले इसका जवाब दे दीजिए। हमारे को जवाब क्यों नहीं देने दे रहे, पहले इसका जवाब दे दीजिए। ये जवाब आप नहीं जानते, आप हट धर्म में बैठे कि हम ही हैं जो कुछ है। आप कुछ नहीं है, टेलीविजन चैनल कुछ नहीं है, कोई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आप कोई गवर्नमेंट नहीं है। आप कुछ नौकर हैं, कुछ सैलरी लेने वाले लाख की, बस इतना है।
आप ऐश कर रहे हैं, ज्यादा पैसे लेके एंजॉय कर रहे हैं बेवकूफ बना के, और पब्लिक में पॉपुलर हो गए आप। इतना ही तो है। तो पब्लिक में पात्र तो उल्लू भी होते हैं, कुत्ते भी पॉपुलर हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। इससे क्या होता है? इंटेलेक्चुअल कितने आप ये बताइए, आपकी मेंटल डेवलपमेंट कितनी हुई आप ये बताइए, आप कितनी पावर रखते हैं सोचने की ये बताइए। है आपके पास? नहीं है आपके पास। हम जानते हैं बहुत जर्नलिस्ट के बारे में, कुछ नहीं कर पाए जिंदगी में, जर्नलिस्ट बन लास्ट में आके। कभी वो मेडिकल में डॉक्टर बनना चाहते थे, कभी आईएएस बनना चाहते थे, जब कुछ नहीं मिला चलो जर्नलिज्म ही कर लेते हैं, तो बन गए। जर्नलिज्म मैथ्स नहीं है, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं है उसमें, बन जाओ जर्नलिस्ट ही बन जाओ। और बहुत है आज, लाइन लगी है, लाइन लगी है। प्रश्न नहीं करने आते लोगों को, जर्नलिस्ट बन गए। बस एक हाथ में ले लिया कैमरे वाले लिया, हाँ जी ये हुआ, जवाब सुनते रहेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं, पता ही नहीं। ना उन्होंने संविधान पढ़ा है, ना उन्हें उस चीज का ज्ञान है, उन्हें कुछ नहीं पता, बस जर्नलिस्ट बन गए साहब। अब मैं क्या कहूं इससे आगे, बताइए। कुछ मतलब रहता है कहने का? इसलिए मैं बात करना चाहूंगा, फिर कभी मिलेंगे भाई। मुझे शहीद वालों को बहुत अच्छा लगा कि कुछ चलो अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज वो कर रहे हैं तो देश भी ऑर्गेनाइज कर लेते, लेकिन उन्होंने कुछ कमी है उनमें, मैं मानता हूं। पब्लिक है आखिर, कोई आईएएस ऑफिसर तो नहीं बैठा उनके साथ, कोई कंसल्टेंट में नहीं बैठा उनके साथ, वो खुद ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बड़ी सी बातें खुद कर तो रहे हैं, अरे दिल में तो है कुछ उनके देश के लिए, आपके मेरे में क्या है? अगर मेरे भी दिल में होता तो मैं 2 घंटे और बैठता वहां पे, लेकिन मुझे अपनी प्रॉब्लम, मैंने अपनी प्रॉब्लम को ऊपर रखा, उनकी को नहीं रखा। उनकी लाइन लगी है, ठीक है, मेरी गलती है, मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं छोटा मान रहा हूं उनको अपने से। बस सॉरी, मैं अब छोटा हूं उनसे, वो ऊंचे। वो सीरियल में बैठा के बैठे, किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। बेशक मुझे नहीं मिला चांस, कोई बात नहीं है, लेकिन उनका अपना सिस्टम तो है। उन्होंने लिखा था अगर आप दूर से आए, आपका रिटर्न टिकट है तो ठीक है, हम आपको चांस देंगे पहले, लेकिन मेरे में वो लागू नहीं होता। मुझे इस बात का दुख नहीं है, अच्छा है उनको सिस्टम तो फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। काश हम सब भी सिस्टम फॉलो करते, काश एमपी भी सिस्टम फॉलो करते, काश प्रधानमंत्री भी सिस्टम फॉलो करता, काश राष्ट्रपति भी सिस्टम फॉलो करता, काश हमारी जुडिशरी भी सिस्टम फॉलो करती, तो इस देश का कल्याण हो जाता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अब ये नेताओं को धक्के मारो जितने भी हैं, और पब्लिक के आदमी आए चुनाव जीत जीत के, तब इस देश का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस देश का भला कभी नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। जय भारत कह के अब मैं खत्म करता हूं। जय भारत, वंदे मातरम।